Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, Yes. I think we can start now. We waited a long time. One or two students are there missing, but it's okay, I think. So, okay, let's begin with the class today. So we have few more students today. I think Anag, Anag has joined for the first time. Yesterday, Anag was not there, perhaps, and Jay was not there. Jay was also not there. Jay and Shubham were not there. Hemraj was also joined today itself. Yesterday, we briefly introduced ourselves one another, and thereafter we proceeded to see that how any essay can have some themes which are common to all. Okay, so I will take up this thing today now. Then, how to write a philosophical essay, or continue with this theme, how to write a philosophical essay. And see, yesterday we did this. Yesterday we discussed this thing that that most of the teachers in India, they are somewhat oriented towards left. And if we think from their perspective, or if we think from a philosophical perspective, we can always do one thing in our essays, which can help us, is to discuss how technology, the negative role of technology, the negative role of capitalism and authority. These three things we can discuss, and we can criticize any essay topic, and we can draw up some points from here. How technology is the technology has taken away the pleasures of life, has created false identity in front of us, has disrupted relationships, has given us false goal and dreams and aspirations, and we have been alienated from ourselves. These are the human grounds through which you should look at technology, not necessarily that how technology can increase mm, GDP, or how technology can give rise to new jobs. That is a matter of some economic experts. But we, as people belonging to humanist disciplines, we want to see a topic, for that matter, that how it uh, is seen from a human's perspective. What is its effect on human relationships? What is its effect on the life experiences of a person? These are the things through which you give this appearance to the to the reader, that that you are writing from your own convictions, as in you have experienced this thing in life. So I told you three things: that you must criticize technology, capitalism, and authority. These are the three things who any professor, if you walk into the room of any professor in India, he would always be skeptical towards the increasing role of technology in our life, the increasing capitalism. And today we will add one more thing into that, this list. And the third, this capitalism, in the sense that everything is turned, this capitalism which is increasing greed in society, consumerism in society, and the market in society, how this market is monopolizing our mind, how this market is influencing our mind, it is influencing the choices that we make, and so on. And every professor in India, just because he's a professor, I am assuring you that he dislikes authority. Teaching profession, every professor dislikes authority. Why I'm telling you again and again about these professors? Because ultimately your copy is to be evaluated by a professor somewhere. It is not to be evaluated by an administrator.
It is not to be evaluated by some of your peers. So you have to learn this art of writing an essay according to the tastes and thought processes of your reader. And your reader is an intellectual or a professor somewhere in our countries, from whichever corner he is. So whomsoever I've met so far in life, I've seen this thing that these people, they dislike technology, they dislike capitalism, and they dislike authority. One more thing today, which we can add into this list, which is somewhat related to capitalism, and that is commodification. This is another tool which you can add to your list. Commodification. What is commodification? Can someone explain what is commodification? Uh, Commodification basically means uh, to attach money value to everything and something which can be bought and sold in the market. Means basically we are taking out the human element out of that, like commodification of love, as seen in social media, something like that. Sir, you are muted. Okay. I said one person was missing out there. See, in any philosophical essay, now how do you have to become a philosopher, and to be a philosopher, to write a philosophical essay, first and foremost, you need to have certain philosophies of life. And these philosophies of life, five, six philosophies of life, and be master in those five, six philosophies. Try to see any event in the perspective of those five, six philosophies. And once you have mastered them many times, over and over again, then you will see that any topic that comes to you, or at least a majority of topics that come to you, you can interpret those topics in the light of that philosophy. And I'm just going to demonstrate to you this thing. One second. I just, Harsh is trying to, I think Pankaj is trying to, I don't see where, okay, two guys are there. Preet and Pankaj. These guys are already there in the meeting. Okay, everyone is there. Oh, till now you can't even see my screen. You could have at least told. Can you see my screen? No. No, sir. Oh, I was under this impression that you can see my screen. That was that is why I was scribing over it all this while. Sometimes mistakes happen. Okay. Now you all can see the screen. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay, good. So we were discussing that how to write a philosophical essay, and in that about that I said that to write a philosophical essay, you have to be like a philosopher. Shed your skin of a student, shed your skin of a person who is very much enthusiastic about technology and gadgets and so on, and try to look at life from a philosopher's point of view. And what are the how do philosophers think? Philosophers, as I again and again I'm repeating you these things so that they get deep inside your mind, that the philosophers, the intellectuals, all these people, they dislike technology, they dislike capitalism, they dislike authority, they dislike how technology has disrupted our relationships. That is why in their fantasy, when they will try to fantasize, or when they will try to create a picture of a wonderful life, they would always think of something which is more rustic, or close to nature, or close to rural areas, or a place which has not yet been infiltrated by the modern, by the technological, or the civic life. There is are you getting these things? In a similar way, capitalism also is being disliked, and whether it is the right wing people, whether it is the left wing people, they both dislike the increasingly capitalistic view of life, where everything has become or everything has been impacted by capitalism. Even the way
we for example are using our creams or living our relationships, everything has been impacted by capitalism. Next is authority. All philosophers from the very first day are against the state, against the authority. I remember Javed Akhtar saying this thing very proudly about Urdu language, and he says that all the literatures in the world, they start from religion, but towards the later stages they become anti-state, and Urdu has been, they become anti-religious, all the literatures in the famous languages. But Urdu from the very first day has been against religion. What he basically wanted to say is that they have a certain rebel attitude. Philosophers and people from literature, they have a rebel attitude. They do not want to be confined by anything that is either the state or the religion. They just do not want to be confined by anything. One second, one more. I think one more student is again wants to enter the room. You people should be there by the time the class starts. One second, one of your friends is trying to enter the room. See, this is how flow is so important. Every time flow is breaking, there's a disruption in flow, and it severely impacts the quality of performance. In a similar way, when you're writing essay also, that time also you need to be in a flow. Flow टूटता है तो चाहे रीडर हो चाहे राइटर हो, सबको सब की ही परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है. हम्म, आप लोग कल से प्लीज ये 8 बजे तक सब लोग ज्वाइन कर लिया कीजिए, ठीक है. दिस इज वेरी इरिटेटिंग. और आई विल क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप इन विच यू ऑल कैन सी द लिंक, अगर कोई जीमेल पे या कहीं पे नहीं देख पा रहा तो. एंड प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. उसके अंदर क्वेश्चंस या फिर कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो भेजना, या फिर इफ यू वांट टू आस्क समथिंग इट कैन बी डन इन दैट टेलीग्राम ग्रुप. Now this person Raj has, I think he's not yet joined the group. Sir, what is the name of that Telegram group? I will create it. I will share with you. Okay. अब इससे बार बार फ्लो टूट रहा है इस चीज से ना. मुझे पता, चलो anyway, let's wait by the time till the time is on. Sir, also there's a request like, can we do the session at around 8, at around 6 in the evening? Right now. Hello, sir. Hello, yeah. So I was saying ki all of you should be here by 8 when the class begins. And there is a password also which has been provided to you.
So in case you are waiting, you can just enter the password. You will not be required to wait to seek my approval. The password is pretty simple. It's a very simple Sir, password. sir, but sir, link was not found. So I was also waiting for the link. Raj, I had sent you on email. मतलब सबको email पे भेजा था. Okay, sir. तो Okay, sir. एक परमानेंट लिंक बनाने की कोशिश करेंगे या फिर If a group is there, then we will inform earlier. okay, Otherwise, is it okay if you all can join Telegram? कुछ लोग यहाँ पे WhatsApp पे हैं, कुछ लोग Telegram पे हैं. Telegram is good. I think Telegram is good, sir. Telegram is better than WhatsApp for these group activities, I think. because sir, you send me link on WhatsApp, then I have to just copy paste it on Telegram and then open on tab. So better time. Okay, now one more candidate is waiting now. Sir, I did not get any mail regarding this class yesterday also. Okay. अरे हर्ष, आप तो आई थिंक आपको शायद आप तो दूसरे उसके स्टूडेंट को शायद कोई नहीं. Let's continue with this. तो फाइनली आप सब लोग आ गए हैं. मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि कल 8:05 तक मैक्सिमम, या फिर आप पहले से लॉग इन करना शुरू कीजिए 7:50 से, एंड बाय 8 प्लीज बी हियर. ओके, ताकि ये टाइम वेस्ट ना हो. एंड देयर इज अ पासवर्ड विच फॉर दिस मीटिंग you can use that password, and you will not have to wait for me to approve or to admit you into the room, so that the time can be saved. We've wasted a lot of time today. Sir, what is the password? You can see in the mail. I will. Okay, sir. Okay, yeah. So yeah, let's begin. I have to begin all over again. So yeah, someone was telling about commodification. Someone was telling about commodification. Yes, sir. Yeah, please go ahead. Basically, I was saying that commodification is a process in which basically monetary values is assigned to anything, and hence it is basically treated as a product which can be bought and sold in the market, and it is closely linked to capitalism, because in capitalism the underlying philosophy is profit making. So hence in the commodification process, basically it is deprived of any human element, like commodification of love, commodification of women by the media, and so on. Wonderful. Can we have more examples on that? Even commodification of nature. Right. Now everyone think about it. How far can you extend this idea, commodification? Sakit, you're told Commodification of humans, like, give example. like employees, workers. Sir, commodification of Slavery. relationships. Sir, commodification of relations. Sir, One second. Religion. One second. Yes, exactly. Wonderful. Commodifications of relationship. Who told this? Sir, Raj. Raj, what is the example? Commodification of relationships. Sir, we treat a woman as a wife as a commodity, and some children, for example, sir, pornography or patriarchy. We tell our wife what to do, what not to do. And yesterday, sir, you provided the example that we just treat a woman as a 1 year plan and then just leave it only for sexual pleasure. I think you are right. You are right. Dating apps. But wait for a second. But right now you're rather told about commodification of women, not commodification of relationships. Your focus was on commodification of women, which is right, but not on commodification of relationships. And one thing, yesterday Shriveni asked that, sir, how do we talk about sensitive things? And there, in that context, I had said, unless it is required, then try to be neutral in these two things. So like relationships, it's not just wife who is being looked as a commodity, but even husbands. You could have said this thing that today's marriages are being conducted and relationships are being sold, being sought as if they are some commodities. So based upon their earning powers or based upon how much dowry they can extract and bring, relationships are being created.
Sir, So there even is another example of commodification of relationship we can see from the dating apps where we can buy premium accounts by paying some money, and we can actually increase our chances with matching the other people. So that is indeed like trying to bring in money in the relationship aspect and These dating culture. matrimonial sites. See, I think this dating app example, it is like it is some extent to that example. It is, but it's not exactly very reflecting the core idea of commodification of relationships. sir, can we say Listen, the reason being, when you say commodification, it means that you are treating that thing as if it is a commodity, as if that thing can be purchased or sold, as if it has a price attached to it. Just like the first point here was sold and purchased. This was what he had said. So Sir, it's not Sir, just can I? Sir, in Japan, there is an like commodification of relationship is happening through people are paying money for a person to spend time with them. So if there is a lone person, he is paying some money for an hourly on an hourly basis, so that Yeah. the elderly are not feeling alone and they have no psychological trauma and all that things. Yesterday, sir, the last year I had. And dowry a part Mhm. and dowry a part of commodification of relationships. Yes, exactly. Sir, D- sir, sir, can I even can try, you sir, hear one me? example? yes, we can hear you, Varun. Sir, sir, mental health. How is mental health then? Sir, if nowadays if we want to talk about mental health, then we have to pay and talk about mental health. There is no one to talk about it. It's become a commodity for those who, example, therapists. Our mental health has become a commodity to them to earn money. Sir, sir, can I try one example, sir? Shivani, I was not very matlab, I'm very matlab, somehow your explanation is not to the point. Like if you could have connected this thing in this way, that the sickness today also has become mental sickness has become a commodity where people are trying to make profit, the therapist and so on. Or Yes. see, I understand that now, but somehow now that is contrary to the point, to the need of mental health to be recognized as a serious ailment. Sir, sir, can I try one examples about relations? Yes. Sir, in the today in the Western culture, so there has been a growing tendency of swapping of partner for economic gains, swapping of partners for economic gains. Married couples, swapping of partners in Western culture. Yes, definitely. Definitely. sir, one more It's a example which we can, commodification of religion. Yes, sir, commodification of religion, very good. sir, And how in do a we say Commodification of beauty. how do we say commodification of religion? Explain that. Just explain it this in 2-3 lines. sir, in a relationship, sir, we can give one more example. Like in recent times, we have seen celebrities are giving the sponsorship rights of their marriage function to web stream portals and making huge money out of that. See, right. It, it it is maybe commodification of marriage rituals, maybe marriage rituals. See, when we say commodification, understand this thing. All of your examples are right, but it's just that some examples are more to the point, more self-explanatory than others. Commodification is when something, some entity, it has some rules to perform. Consider anything in this world, whether an human being or whether something, it has some roles to perform. Maybe, like for example, give you emotional support. Maybe, for example, give you some sort of pleasure. Maybe to work in the fields. But when you just deprive this thing of those roles and you treat it as an object which can be purchased, you assign a monetary value to that. So it loses out its primary roles, its primary objectives. The primary functionalities are detached from it. So when we say
commodification of marriage or commodification of relationship, what are the primary things that you are expecting from your spouse? Now, instead of your spouse fulfilling those primary needs, he is fulfilling some other needs that are purely monetary or consumerist. This is the exact meaning of commodification. That you are treating, you are detaching the original purpose for which that thing was meant to be. Like, for example, hill station, or at a hill station, for example, what was hill station meant to be? The place, it was meant to be a place where you could retreat from your urban civic life, where you could find some pleasure, some solace, you could get connected with nature, where you could get connected with yourself. But now it has become a tourist activity, tourism. People go there, they spend money, or people who are living there, they earn money, but they do not do those primary things which were actually supposed to be done from that place. It is only monetary things that they are doing from it. So similarly, when we are talking about relationships, your marriage, why do you marry? You marry for some objectives, right? As we said, emotional support, even sexual gratification is a legitimate function of marriage. It is not to be criticized in that respect, but it is when you see a person, how much wealth he or she can generate for you, at that point of time, marriage becomes a commodity. And then all those things that you do with an object, just like you take an object, you pay a price, you get it. If you like it, you retain it. If you don't like it, you throw it away and you buy something else. The kind of things which you do with an object in the market, the similar kind of things you start doing with that person or with that thing about whom we are talking in respect of commodification. So like religion, for example, somebody gave this word religion, commodification of religion. How could we say that religion is also being commodified? Sir, VIP lines for darshan. VIP lines for darshans, right? Exactly. So Please, for example, the recently All these and paid I- spiritual retreats. and I advise you all that whatever we are writing, just keep scribing like this. Okay, I'm writing this so that you can understand it, but actually, had I been a student, these would have become very good notes. तो आप सभी भी थोड़ा सा स्क्राइब करते रहो, ताकि एग्जाम से 2 दिन पहले, एग्जाम से 1 दिन पहले आप जीएस रिवाइज कर रहे होगे, हिस्ट्री रिवाइज कर रहे होगे, और आप सब भूल चुके होगे सारी जनरल चीजें जो आज बड़े अच्छे से याद हैं. तो फिर उस टाइम हेल्प करेगा. बस जैसे मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूँ ना, ऐसे कीवर्ड्स लिखते रहिए. बाकी स्टूडेंट्स जो एग्जांपल्स बता रहे हैं उनको भी लिखते रहिए, जो मैं बता रहा हूँ वो भी लिखते रहिए. दिस वे यू विल मेक अप सम वेरी गुड नोट्स फॉर योर प्रिपरेशंस. यस, Paid spiritual retreats. spiritual retreats, exactly. Spiritual retreats and this for example, sir, recently released movie Adi Purush. Yes, very good. It's a toxic combination of religion and Yeah, someone technology, right? Exactly. We can't bring in authority here, but at least yes, technology and Capitalism also. capitalism. Sir, I have an example of authority, sir. So commodification of power by the state. For example, sir, as you mark the role of, for example, sir, the elected member of legislative assemblies, they are, sir, for money, they are just, I don't have the word. Horse trading. They are just defected, sir. So, yes, sir, horse trading. Exactly. Commodification of power by the state. Politics. Yes, exactly. Commodification Even of sir, in education, we all know. Yes. even sir, in bureaucracy, we hear news of paid transfers that people are paying to get transferred to, or to get a plum posting. So that can also come under commodification. Yes, everything. Yes, these can also come under commodification. See, but the better the point which I want to say is that can you see commodification even in areas where nobody can see? Like we have heard about commodification Sir, of religion. commodification of beauty. Commodification of beauty, yes. Beauty contests, for example. And see The see beauty contest, when they select people, they spell out
some dimensions in which a person should fit into. Isn't it like very much dehumanizing a person? Why should only people of a particular length or width be allowed or allowed to participate into it? So it's very much commodification, and all this cosmetic industry which try to promote one skin as better than other skin, one tone as better than other. They are definitely commodifying. And in fact, medical services, even commodification of medical services. Today, we see so much of medical services related to cosmetic surgery. And see what a beautiful contrast it is in our country. Our country is one of the biggest market for cosmetic surgery on the one hand, and on the other hand, we are the same people where basic healthcare facilities are not available. So tomorrow, if you are commenting on the healthcare, you could have given out this contrast. And this reminds me of this thing. In your essays, always try to create contrast. So for example, here right now, when we are saying that commodification, when we suppose this essay was on healthcare, or suppose you were talking about a point like healthcare, and a point like this had you made, that in a country where people even struggle to get paracetamol, and sometimes people die for the want of paracetamol tablet, we are having one of the biggest cosmetic surgery market. So this shows, this is what contrast is. What is contrast in an essay? Where two extreme things, they are joined together. Now ये थोड़ा आपका presentation skill से याद आ रहा है, थोड़ा ध्यान इससे related है. Extreme दो चीजों को एक point पे लाके रख दो, बिल्कुल extreme ideas को, और ये आपको practice तब होगी जब बार बार आप थोड़ा सा कोशिश करोगे. ऐसा नहीं है कि India is largest exporter of medical practitioners despite of such a shortage at home. So that can also be a contrasting point. It can be, लेकिन इसी चीज को explain करने के लिए आपको थोड़ा सा creative language use करनी पड़ेगी. For example, in spite of on the one hand we see huge queues of people in front of doctors' home for waiting for in government hospitals, etc. So and so, people dying out there for lack of healthcare. On the other hand, we see India being one of the biggest exporter of medical healthcare professionals. थोड़ा सा उस चीज को ग्राफिक अपील देना, जो आपका पॉइंट है ना, उसको एक ग्राफिक इमोटिव बनाना. हाँ, उसको एक विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए. जैसे अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि इन आवर कंट्री फॉर एग्जांपल और वर्ल्ड ओवर क्लाइमेट चेंज इज टेकिंग प्लेस, तो आपको सबको पता है चीज. बट इफ आई से दिस थिंग कि जस्ट लास्ट ईयर in Britain there were heat waves, and people were feeling in Britain as if it's a desert area or as if it's a very hot place. अब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हुआ, तो इस तरह ये बहुत ही लाइट एग्जांपल दिया आपको विजुअलाइजेशन का. कभी जब भी अपने ऐसे में बात करते हो तो थोड़े थोड़े से ना इन वर्ड्स को यूज करके विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करो. तो ये सारे पॉइंट्स पे करना है, जो भी पॉइंट्स लिखो उसमें मतलब एग्जामिनर को विजुअलाइज कराने की कोशिश करनी चाहिए. सब पे नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो भी गलत है, फिर आपके ऐसे की स्पीड कम हो जाएगी. फिर तो वो थोड़ा वेरी करना चाहिए. कहीं कहीं पर हमें विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, कहीं कहीं पर हमें खाली पॉइंट्स डाल के आगे बढ़ जाना है. वो बैलेंस जो है वो थोड़ा सा मॉडल आंसर में देखना है, या फिर वही बात है जब आप एस्टिमेट लिखोगे तो मैं वहां पे आपको थोड़ा पॉइंट आउट कर दूंगा. एक मॉडरेशन में, हर चीज मॉडरेशन में करनी है. Sir, I have an opinion. About what? I don't know whether it's correct or not, but I want to say. Yes. So happiness is commodified. Example, consumerism. So it can be linked with consumerism. Example, in consumerism, take Google, Amazon, Flipkart, or anything. If we buy many things, we feel happy. Then they are commodifying that. I feel that they are benefiting out of our happiness, or they are praying us based on this. I feel that. I don't know it's correct or not. Right. Like all these Dominoes and all these fast food chains, what they do is that they will promote this idea that to be happy, you have to go to a fast food chain, or their services you have to avail, whether it's Coca-Cola or Domino's and so on. Sir, even meditation gurus are selling happiness by saying that if you do such and such meditation, then only you can be happy. Right.
And Commodity. one second. The moment when they say that you have to join me, join my program, join my course, join me, then only you will find peace. At that point of time, they are commodifying it. Had they been saying this thing that go and join yoga or do yoga by yourself, then you will be happy. That at that point of time, we wouldn't have said that it's commodification. Commodification when they themselves are attaching a price to it and taking benefit out of it. And one second, I just gave you this example of Domino's and Coca-Cola. Notice this thing that I did not give you an example of Sagar Ratna. Remember this thing? I did not give you example of Sagar Ratna. So why? Because Sagar Ratna is our own Indian. Domino's बाहर का है, विदेशी है. Coca-Cola बाहर से है. Colgate, Close-Up, ये सब बाहर के हैं. तो इनको जितना क्रिटिसाइज करना है ना इन कैपिटलिज्म कंपनी को उतना करो, बिकॉज इंडिया में लेफ्ट विंग हेट्स देम, राइट विंग आल्सो हेट्स देम. आपकी कॉपी किसी के पास भी जाएगी वो डेफिनेटली इस इसको पसंद करेगा. एंड मोस्ट प्रोबेबली ही वुड बी अ पर्सन. देखो फिर मैंने आपको कल बताया था ना, ट्राई टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनर. आपका एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली एक 50, 60, 70 ईयर ओल्ड पर्सन होने वाला है. हमारी उम्र का तो है नहीं, 20, 25, 30 साल का तो होगा नहीं वो. When he is this much old, तो आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए कि 50-60 इयर्स के लोगों को क्या डोमिनोज ये सब पसंद आता है? ज्यादा नहीं. उनके बच्चे अक्सर जिद करते हैं कि यहाँ लेके चलो, वहां लेके चलो. आप इस चीज को क्रिटिसाइज करोगे, डेफिनेटली यू विल स्ट्राइक अ कॉर्ड विद देम. बार बार अपने एग्जामिनर का चेहरा अपने सामने बिल्ड करो, एक ऐसे इंसान का जो कि 50 या 60 ईयर ओल्ड है. आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ये चीज बहुत जरूरी है. कल मैंने इस पॉइंट को बहुत ज्यादा yesterday I had focused a lot on this point, that how you need to keep a visualization of your examiner in front of your eyes when you are writing an essay. And your examiner is a person who reads Times of India, who reads these WhatsApp kind of thing, who has Facebook and all the social media he is using. He is not necessarily a person who is reading the gist of economic survey which are being sold in Rajendra Nagar. वो वैसा नहीं है. तो उसे अपने जैसा मत मानना, उसे वो चीजें लिखो जो एक जनरल पर्सन को ज्यादा क्लिक करती हूँ. Commodification of insecurity and fear. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. commodification of insecurity also. There was this app that teaches children coding, 5-year-old children coding. So they are basically milking the insecurity of the parents regarding their children's career. Yes, exactly. Very good. Even the beauty creams can come in this example. Say again. Beauty creams can also come in this example. Right. So can we relate this to knowledge? motherhoodness, sir. Yes, one second. Now I want the point which I want to tell you here is, अब अगर इतने अच्छे से समझ में आ गया सब लोगों को कि what is commodification, तो अब मैं आपको इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ. सपोज आपके सामने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है. Sir, राइट. यस. Sir, one last thing. Sir, we have discussed a lot of relationships, but sir, we have just commodified the life of human itself. For example, sir, in the Machu Dam, the bridge was fallen. More than 150 people have died. And the next day, Prime Minister was visiting the hospital. And instead of treating the people, they were treating the hospital. They were decorating with colors the hospital for the welcoming of Prime Minister, rather than treating the human, rather than saving the life of human. See, this thing has to be criticized, but two things which I want to say, Raj, maybe this is not a very accurate example of commodification. But had you explained this thing on this line, ki like lives are being, when people die in some tragedy, then a monetary compensation is given to them. Yes, sir. For example, in train accident, but the pain of the death of a human life cannot be measured in the monetary compensation. Yeah, that could have been better. But one second point here is, remember, जो अभी मुझे explain किया, it is okay, but never ever write like that in essay. Never ever criticize Prime Minister so straightforward. Okay, remember this thing. You अगर लिखना भी है, अगर आपको इस बात को थोड़ा generalize करो. For example, when there are certain tragedies in some places, politicians visit that place for photo shoots and photo ops instead of actually trying to see if damage control or lives can be saved. जनरल ऐसे लिख दो कि इशारा भले कर दो, लेकिन नाम कभी नहीं लेना वहां पे. ठीक है राज?
Rohit gives this example: commodification of motherhood by using technology like surrogacy, IVT, etc. Rohit, I will tell. Yes, I sir. will. Okay, right. Rohit, you could have spoken also. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what you have said? Sir, commodification of motherhoodness, like surrogacy technology, IVT technology. सी राइट, बट थोड़ा सा ना अपने एसेज में या कभी भी कभी पॉइंट लेना हो ना, और अगर आपके पास चॉइस हो तो फिर ऐसे एग्जांपल दो जिनको रिफ्यूट कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। जैसे आपने जो एग्जांपल दिया, जैसे आपने बोला कमोडिफिकेशन ऑफ मदरहुड, आपने द नेक्स्ट वर्ड यू सेड वाज IVF and things like that. Surrogacy, yes, it is a very good example of commodification of motherhood. Where and Sir, see add some more details into this. उसको पंच लाइन बना, उसको और पंच डालो। कैसे लिखोगे? Even womb has been commodified. yes, ये sir, मुझे बड़ी yes, sir. प्यारी लाइन यहाँ पर आ रही है। We are living in a world where even the womb has been commodified. Sir, can babysitters can come in this? They are on the gray zone, babysitters. Sir, but in case of altruistic surrogacy, we can't say this. नहीं That कह it has been सकते, common. So but I think we should write commercial surrogacy, something like that. right, right. You थोड़ा commercial word ऐड कर देना, but it is ठीक है। वो altruistic surrogacy कोई होता नहीं है. It is usually people do it for money only. And one more point, okay, one more comment was there from this person. Commodification of relatives. People make relations with wealthy relatives. Modification of life via VL. What is this? Vlog of children and destroying mental health of our own child as well as by our own by faking life. Exactly. For example, Chacha Mama. Yeah. Right. Nobody like poor relatives. There was this person, अगर जिसको नाम याद करने की बहुत आदत हो, Charles Lamb. He was one of the most popular essay writer once upon a time, when essay writing, the art of essay writing was just blooming 200 or 300 years ago in 17th or 18th century. Then this person was there, Charles Lamb. He used to write essay, and he wrote a very famous essay at that point of time, Poor Relations. In that essay, he basically said the same thing, that nobody likes poor relatives. And your relatives love you when you have greater wealth, and if they can have this idea that they can extract some wealth from you. So anyway, 100% true. Even today also. yeah. So now we will the point which I'm telling you here is, आप इन philosophies को अपने अंदर बिल्कुल जहन में डाल लें। टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज करना है, कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करना है, अथॉरिटी को क्रिटिसाइज करना है, कमोडिफिकेशन को करना है। अब इस कमोडिफिकेशन पे जो आज हमने इतना काम किया है, आई वांट टू शो यू। लास्ट ईयर देयर वाज दिस टॉपिक। सपोज लास्ट ईयर हम के टॉपिक्स, एक टॉपिक लेते हैं, a ship in harbor is safe, but that is not what the ship is for. Okay, now commodification we are talking about, and here is this topic. A ship in, आप लोगों में से बहुत लोगों ने लिखा था ऐसे last year, is safe, but that is not what is ship. अब इस पे आप कैसे इस commodification को apply करेंगे? If you got some hint. Yes, sir. Can I go? Yes. Sir, the first part we have to, as you told, that what is the function of any organ or any relationship, anything, and then what the commodification is trying to destroy. We have to sit in that part. कि फॉर एग्जांपल की सर एग्जांपल हम ऊपर से ले कि जैसे फॉर एग्जांपल की कमोडिफिकेशन ऑफ रिलेशन, तो रिलेशनशिप का अर्थ क्या होता है? जैसे हम कि फॉर एग्जांपल लव होना चाहिए और केयरिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। सो दैट इज द शिप इन हार्बर इज, सो ये शिप इसके लिए बना हुआ है, मतलब रिलेशनशिप ये होती है, पर उसमें कमोडिफिकेशन आ गया, ये आ गया, तो इसके लिए शिप मतलब नहीं है इस तरह से। राइट। देखो, व्हाट आई एम, आपको मैं जो एग्जांपल देता हूँ, ये जब ऐसे लास्ट ईयर आया था, इन केस अगर आपने लिखा होगा तो एक चीज आप थोड़ा समझ ही रहे होंगे
कि basically ये जो essay है, it is talking about this virtue of courage or risk taking. ठीक है, ये इन दो May I add something in this? right, Pankaj? Yeah, Pankaj, let me continue for a while. Sir, Okay, yeah, you yes, go. yes, sir. Okay, Pankaj, go ahead. So, and I also attempted this one in last year, sir. So I had written something about mountaineering expeditions that are being arranged by these companies, because this essay talks about living your comfort zone. So if you add commodification in this one, then a human thinks to like conquer everything that he faces in his path. But the mountaineering this courage as a commodity thing. Right. So, for example, courage or the desire to be courageous is also being sold as this as a commodity, and whether it is mountaineering, which you told Pankaj, or whether it is the recently that tragedy that took place, that submarine tragedy. So what we saw over there was that the desire to see the unknown and the go for these risky expeditions. These are good things actually. If had there been no expeditions, we would not have discovered America, or these trades would not have been there in the countries, intercontinental trade would not have been there. It's great for us to be courageous, but is it really this? What is this sort of courage? This submarines, like Titan, they're commodifying this thing, this risk-taking thing. They're commodifying their courage. So these are some things which I can draw from your example, which you said. But an example that was on my mind, and I think that is wonderful, that had I been writing this essay, I would have applied this principle of commodification to criticize this topic towards the end, somewhere towards the end, where I would have said that, for example, even courage is being commodified. And where do we see commodification of courage? I'm telling you, I'm giving you some hints. Commodification of firefighting was this fighting and war. Where do we see that? We have faced that brand so many years. Mercenaries. What's the spelling of mercenaries? I am forgetting it. Mercenaries, check it on that. So mercenaries, or the soldiers who are being taken on rent, or terrorism which is being exported from on the basis of and it's mixed with commerce. Like we see many terrorist organizations, they are outsourcing their terrorist acts to some other groups. They're taking money and they are doing out those terrorist activities, and they are not necessarily committing terrorism for the sake of some ideology. They're just doing it for money. So here we see that how this negative connotation of courage. मर्सनरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? What do we say mercenaries in Hindi? भाड़े का सिपाही, something like that. वो तो आपका explanation हो गया. There is a word for that. So recently, Wagner Group, Russia. Wagner Group, Russia. Russia भी, there was a group somewhere below its belt which just they supplies these fighters. They take some money and उसी they का supply नाम these Wagner fighters. Group. Wagner. Wagner Group, right? Right. So we see in this way. अब ये वाला जो essay था, आप इस essay को describe करने के बाद अगर last में देखो, हमें ऐसे में पहले क्या करना था, हमें करेज वाले वर्च्यू को बहुत ग्लोरीफाई करना है, इन वर्च्यूज को, बट समवेयर टुवर्ड्स द एंड हमें उन्हीं वर्च्यूज को थोड़ा सा, आई वोंट से क्रिटिसाइज, बट हमें ये भी कहना है कि देयर कैन बी एन अदर पर्सपेक्टिव आल्सो. व्हाट इफ ये वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर करेज हैज आल्सो बीन कमोडिफाइड. So इसमें इन्वेस्टर्स का जो रहता है, जैसे people are using this courage and excuse to make us invest in risky assets like crypto or other such assets. So वो भी तो एक हो सकता है कि it is using our courage to meet their ends. राइट. मतलब और rather replace that word courage with risk taking. ठीक है, yeah, you are right. ठीक है, you are absolutely right कि how these influencers sometimes, or people who are managing these financial consultancies, they promote this idea that as if
investing in fixed deposits is a backward and is an or is a or the person is coward, or he is not good enough to take risk, and how he must invest in these either in some share market or in these cryptos. So you're right. That can be an example. Sir, can we Sir, say that that even the coaching institutes of UPSC, they also try to commodify courage and try to make students give multiple attempts so that they can make profit out of it. And even when someone from poor and vulnerable section cracks the exam, then they make him or her a poster boy so that it can encourage many others to enter this field. राइट एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बट थोड़ा एक्सप्लेनेशन और अच्छा होना चाहिए था, बट वेरी गुड एग्जाम्पल, और इसे लिख सकते हो, ठीक है। कोचिंग इंडस्ट्रीज, और कोचिंग इंडस्ट्री को देखो, आपका हर प्रोफेसर आपको उसको डिसलाइक करता होगा। नो प्रोफेसर लाइक कोचिंग इंडस्ट्रीज बिकॉज कोचिंग वो लोगों को पसंद नहीं करते। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आप चाहे यूपीएससी वर्ड यूज करें या फिर नीट का वर्ड यूज करें, या इन जनरल कोचिंग इंडस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, द बिग, और थोड़ा और यहाँ पे पावरफुल वर्ड यूज करो, द बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, they sell dreams to students on the front page of their newspaper. They will Prey show on their insecurity. they will show the image of the topper and talk about her life. But what about the lives of all those lakhs of students who somewhere lost in this race? So this virtue of courage is being sold as a commodity. And while a person, after a few failures, it may be advisable for him to assess his potential, but these coaching institutes, they insist on this idea of courage, and just so that the students can keep buying their courses at a hefty prices. You could very good example, Saket. सर Right. सर टॉपिक जो है सर शीप का, कि सर इसमें ये टाइम सर शीप को हार्बर में रहना नहीं चाहिए, उनको वॉयज करना चाहिए, यही ऐसी बात है। पर अगर सर सूचना मिली है, इंफॉर्मेशन है कि तूफान आया हुआ है या साइक्लोन है, तो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू गो आउट। यस, वेरी गुड, राइट। तो सर इसका एग्जांपल सर हम हिस्ट्री में से अगर ले, तो सर मराठा का जो थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो सर वो फाइट करने आए थे यहाँ पे ऊपर तक, उनको पता है कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर में मास्टर है, फिर भी इस तरह से और पूरा हार गए। Yeah, we do see this thing. Very good example that if there are warnings, scientific warnings are there. Courage is one thing. See, अब आप वहाँ पे करना क्या है ना आपको, चलो आपको एक ट्रिक और बताता हूँ आपको, फिर दोबारा भी कभी कर लेंगे या तो इस पॉइंट को। जब भी यूपी एक ऐसे दिया जाता है, फिलोसफिकल ऐसे जब भी अक्सर आता है, तो वो कोई एक थीम को कैच करता है, जैसे यहाँ पे करेज है। अब आप उस थीम को ना बाकी थीम से मैच कीजिए। जैसे क्या करेज काफी थी, क्या ऑनेस्टी नहीं होना चाहिए था, क्या एथिकलिटी वहां पे क्या थी, क्या एथिक्स वहां पे नहीं होने चाहिए थे? ब्रिटिशर्स इतना दूर से चल कर आए, हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, अफ्रीकन को लेके जाते थे, समुद्र में गिरा के मार देते थे। करेजियस तो अंग्रेज बहुत थे, बट देयर करेज और इन अ वे देयर डिजायर टू वेंचर आउट, it led to colonization of the whole world, and brutal atrocities were committed on generations and on all different races. So that kind of courage is not something which we want. और फॉर दैट मैटर अभी आपने क्या एग्जांपल बोला, रशिया यूक्रेन वॉर, करेज वर्सेस प्रूडेंस, या फिर pragmatism, या फिर wisdom. In the sense, a soldier must know when to fight or when to retreat. And I remember history में बिपिन चंद्रा में गांधी के बारे में, like he says that Gandhi said some statement like this, na, a good general knows when to retreat. Some statement was like that. Yes, You sir. know, There was also a strategy like fight, truce, fight, something like yeah, that. the struggle, truce, struggle. Struggle, truce, struggle. Yeah, Yes, so yes. That's why sir, after Chori Chora violence, he just retreated.
बट या एग्जांपल देते, चोरी चोरी का एग्जांपल मत दीजिए ना, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। Russia's invasion of Ukraine can be example of this misconceived notion of courage. मे बी यस मे बी नॉट, हाँ मतलब आप कह सकते हो उसे, बट वो उतना ज्यादा क्लियरली मुझे उतना कन्विंसिंग एग्जांपल नहीं लगता उसका, अनलेस आप उसको 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर दो जो आप कह रहे हो। ठीक है, that how Putin is selling this idea of a resurgent strong Russia to his people by portraying, by talking about the idea of courage and not realizing how his aggression is detrimental to the world and global peace. इस तरीके से क्या तो आप एक्सप्लेन करो, बट विदाउट दैट एक्सप्लेनेशन वो उतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल नहीं बनेगा शायद। तो यहाँ पे एक जो अच्छी बात निकल कर आई, आप इस बात को थोड़ा सा अलग से लिख लीजिए। यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको कि जब भी कोई फिलोसफिकल एसे होता है, उस फिलोसफिकल एसे की एक थीम होती है, एक वर्च्यू होता है, और वो जो वर्च्यू है आप उस वर्च्यू को बाकी वर्च्यू से कंपेयर कीजिए। एंड मैं ये नहीं कह रहा आप थ्रू आउट द एसे कीजिए, ये आपको अपने एसे में मे बी 30% मैक्सिमम या 20% इतना ही करना है। पहला 60% आपको ऐसे को सपोर्ट करना है, टॉपिक को सपोर्ट करना है। अभी व्हाई शिप्स मस्ट वेंचर आउट ऑफ देयर हार्बर इज अ वेरी, आई थिंक, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट। यू मे बी हैविंग 100 ऑफ पॉइंट्स टू सपोर्ट दैट। मैं अभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सीधे आपके लास्ट के फ्यू पेजेस पर आ गया था, जहां पर वी वुड बी क्रिटिसाइजिंग दैट टॉपिक जस्ट टू शो कि हम थोड़ा और आगे की भी सोच सकते हैं। मगर हम थोड़ा और आगे के सोच सकते हैं, ये शुरू में मत दिखा देना रीडर को। Okay, sir, can I ask a question? राइट, यस। सर ये ऐसे को आप कैसे शुरू करते हैं सर, जरा आप थोड़ा गाइड करो। मैंने इसका एक मॉडल आंसर बनाया हुआ है आई थिंक। तो मतलब वो ऐसे जो था, आई थिंक इट इज ऑलरेडी देयर, मतलब मैंने शेयर किया हुआ है उसमें। बस उसका मॉडल आंसर इस टॉपिक का नहीं है, वो टॉपिक थोड़ा सा अलग था। वो टॉपिक ये था कि सेकेंड, वो थोड़ा सा मुझे भी ये डिस्टर्ब करना पड़ेगा। All those who wander are not lost. राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऑल दोज हु वंडर आर नॉट लॉस्ट। तो मैंने उस ऐसे पे लिखना शुरू किया था, और वहां से मैंने जो एंड किया था वो यहाँ पे लाके एंड किया था कि शिप्स, जो लास्ट में कोटेशन लिखी थी, शिप्स आर नॉट सपोज टू बी इन द हार्बर, दे आर, मतलब दे आर मेंट टू बी, द शिप इज इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज द शिप इज। तो उस पॉइंट, उस ऐसे में जो पॉइंट ये लिखा गया था कि ऑल दोज वंडर आर नॉट लॉस्ट, उसमें लिखा गया था कि इफ वी हैड ऑलवेज बीन आवर सेफ जोन एंड कंफर्टेबल जोन, then humanity would not even have spread beyond Africa. Why? How could humanity spread out beyond its land? Because at some point of time there would have been some Homo sapiens who would have went away from his cave, it went away from the forest where he lived, and that is how it spread. So even before this, since the dawn, or even before the dawn of the civilization, we see that how this trait is very much fundamental for our existence. इसमें एक बुक मेंशन कर सकते हैं, युवल नोआ हरारी की सेपियंस, हाउ इट हाइलाइट्स द वर्च्यू ऑफ करेज enabled humans to establish their dominance over other species and become master of the world. आप उस पॉइंट को मेंशन करते हुए इस टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहा हूँ कि हाउ करेज enabled. नहीं 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 नहीं, बिकॉज आपके अंदर से, आपने, किसने बोली ये बात? अपनी शक्ल दिखाओ Wait. थोड़ा It's सा। me. हाँ वैभव, थोड़ा डांटना पड़ेगा आपको। सर ये तो क्रिटिसाइज हुआ ना कि वी आर, देखो वैभव, आपको थोड़ा डांट रहा हूँ यहाँ पे, जिंदगी भर याद रखना, और बाकी सब लोग भी बिल्कुल सर। कान खोल के सुन लो। ह्यूमैनिटी में और ह्यूमन डिसिप्लिन में इंसान की ये फितरत कि वो बाकी सब पे कंट्रोल करके रखता है, ये बहुत ही गलत चीज है। Okay. क्योंकि ये जो बिग ब्रदर एटीट्यूड है, तो दिस इज Right. नॉट समथिंग व्हिच यू शुड फील प्राउड ऑफ, दैट सी हाउ वी कुड डोमिनेट द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन species. It's a very negative thing, very Right. negative thing. So rather the same point you could have shown as a criticism of courage, that in pursuit of courage man has tamed the wild. We have decimated so many other species in order Exactly. to, yeah. Exactly, hunting expeditions,
killing tigers one after the other. So इसका ऐसे बोल सकता था कि because of the virtue of their courage, humans have been able to establish themselves as the most superior species. Would that have been okay? No, ये बिग ब्रदर एटीट्यूड आपको बहुत पीछे छोड़ के आना है. Okay. ये देखो, अगर आपने एक एनिमल को डोमिनेट करने की चीज का आप वर्चुअस ले रहे हो, तो आप में से मुझे वो महक आ रही है. कल को आप किसी औरत को भी डोमिनेट करोगे, कहोगे कि सी आई एम सो मैस्कुलिन, सो मैंने इसको टेम कर दिया. Right. आप एक घोड़े को, कुत्ते को टेम करने पे अपनी ताकत दिखा रहे हो, अगर कल को एक कमजोर को भी करोगे, फिर Right. वुमेन को करोगे, ब्लैक को Yes, करोगे. yes. This is very much against the principle of humanism. Very So, much against the principle of humanism. So can I ask you a question? Right. So if I have to present the same point, that how this virtue enabled the humans to be where we are today, so how would you have presented it in a positive way? See, I would have shown you this example. There was a point of time when man was so helpless in front of the world of wild. He used to be afraid of tigers, and he would be slaughtered by wild animals and beasts. He was helpless in front of heavy thunderstorms and floods. But there were some few courageous men who took risk to develop tools and to instill courage in humanity so that it could secure itself from the threats of nature. अब यहाँ पे मैंने इंसान को कमजोर दिखा के पेश किया कि मतलब देखो, हीरो कौन होता है मूवी में? हीरो वो नहीं होता जो अमीर के लिए लड़ता है. हीरो वो होता है जो गरीब के लिए लड़ता है. तो आपको भी अगर आपको कोई हीरोइक वर्च्यू दिखाना है, तो आप कमजोर के लिए लड़ेंगे. यानी कि मैन को यहाँ पे हमने नेचर के अगेंस्ट में कमजोर शो किया कि मैन वाज वेरी वीक, very fragile, very helpless in front of the nature. But then suddenly he became so powerful. But not suddenly in the sense, but with the courage shown by so many of others, he could sustain himself. He could find his and provide security to his women and children. इस तरीके की चीजों को बात करते हैं. Actually, sorry sir, what happened was that I was thinking about that book Sapiens. उसमें he has talked a lot about survival of the fittest. वो गलत है ना, वो नहीं, right, I completely understand. वो अच्छी Right. वो अच्छी बुक नहीं है. Understand my mistake. वो सेपियन बुक अच्छी नहीं है. वो वैसे पढ़ने में ठीक है, बट इट इज वेरी, मैंने उस बुक को पढ़ा नहीं है, बट वेरी ऑफन आई सी कि पीपल हु लव लॉट ऑफ साइंस एंड दे लव लॉट ऑफ रैशनैलिटी, उनको चीज पसंद आती है. सेपियंस वाला जो थॉट है कि एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू वो क्रिएट करता है कि men for example are like this because they have been there for thousands of years like this. Women have been like this, and this is how I think male desires or women desires are like these and this and so on. ये सारी चीजें ना ह्यूमैनिटीज में एक्सेप्ट नहीं की जाती. ह्यूमैनिटी में यू हैव टू, आप ह्यूमन तब हो गए जब क्या आप अपने अंदर एक औरत को देख सकते हो? क्या एक औरत अपने अंदर एक मर्द के दर्द को महसूस कर सकती है? Very correct. इन बाउंड्रीज को जब हम क्रॉस करेंगे, एम्पैथी, तब हम एक ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन को अपने अंदर ला पाएंगे. एंड दीज थिंग्स कैन नॉट टेक प्लेस इफ यू हैव दिस एटीट्यूड ऑफ टू मच ऑफ रैशनैलिटी, टू मच ऑफ साइंटिफिक विजडम एंड सो ऑन. Right, so I completely understood, and I think this will benefit me a lot in future. Thanks for correcting my mistake. It's okay. Yeah, one person is Shivani is waiting for a long time. She wants to say something. Shivani? Yes, sir. Yeah, go ahead. Sir. So can we relate this to exploring potential, one's own potential? How do you do that? With this? What do you want to relate? The topic or commodification or what? No, sir. Topic. Explain it. Explain. Yes. Starting, they have mentioned that come out of your comfort zone. Why we should come out of our comfort zone so that we could realize our own potential. And also, I want to connect this point to reformers. Example, Rajaram Mohan Rai, sir. There was a popular belief of sati during those time, but he took courage and he fought against his own people for uplifting women and to abolish sati. It takes a lot of courage and to realize that purpose to help others. Very good. So your first point where you said that the virtue of coming out of our comfort zone, that is exactly what this topic is. That is the core sentiment of this topic, that harbor means at the comfort zone, places where we are most safe, and that is not the place where we ought to be all our life. So we should come out of it. That is true, very true, absolutely.
The second point with respect to Raja Ram Mohan Roy is okay, is right. But one thing sometimes I feel is when I'm checking essay copies, everyone is writing examples of Raja Ram Mohan Roy and somewhat Gandhi also. Every person. So like out of 10, at least 8 copies, 7 copies have examples of these people. If you can, in the remaining 2 months, try to find some more examples of which Sir, are Abraham Lincoln. it's okay. It's inside India or outside India. And third point, which I want to say here is more important, that the way you explained the example of Raja Ram Mohan Roy, somehow I was not very convinced with that explanation of Raja Ram Mohan Roy. How, okay, like you also need to give an example which is very much in line with the statement. Now, one thing which I told you earlier, that be little graphic. Can you be a little more graphic here? I'm asking this question to Shivan. This the same person, a follow-up question. Be a little more graphic and give Yes, the sir. example of Raja Ram Mohan Roy or social reformers as like social reformers, and then link it with the topic. Yes, sir. So regarding this Rajaram Mohan Roy, his own sister-in-law was supposed to do sati because of Rajaram Mohan Roy's brother. Rajaram Mohan Roy का brother मर गया था, तो उसका भाभी सती करने को जा रही थी, लेकिन he tried to stop it in spite of his family opposing him. See, you are going in. See what the kind of thing that I want to say is, did someone get this example? That how can you talk about social reformers and this essay topic and add a bit of details, a slight bit of detail, sprinkle a bit of graphic details when you're constructing your statement about social reformer and that and the theme of that ship's essay. So may I? Yes. Yes, Pankaj. I would start it with that the very virtue of human is to do good to others. So Raja Ram Mohan Roy is stopping Sati. It took a lot of courage. Yes. Okay. Now I will tell. Sir, can I try? Yeah. I Ram. won't try. Sir, so initially, all the persons are facing the same problem, same social problem. But the person who goes out of their comfort zone and rectify the mistake and try to improve it, then it is called, then he or she is called social reformer. So in such a way. Okay. So can I present it in a bit more graphic way? Yeah, detail. Yeah, please. So at a time when inferior status of lower caste was considered as a common sense, it took courage and conviction for a man like Jyotiba Phule to stand up and raise his voice against caste oppression, to establish a foundation of larger caste movement in the country. राइट हियर वो थोड़ा सा और अगर आपको ग्राफिक होना होता तो आप ये वाला वर्ड भी ऐड कर सकते थे एट अ टाइम when it was considered normal to deny public services like drinking water from well to Dalits and certain sections. It took courage for people like so and so to step out of their homes and face risk in so and so cases. तो आप देख रहे हो जैसे 2-3 वर्ड्स उसी सेंटेंस में स्प्रिंकल कर देने से थोड़ा और कैसे इम्पैक्ट आ जाता है. जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस अगर मैं लिख रहा होता तो मैंने 2 ही लाइन में उसको ऐसे लिखा होता कि सोशल रिफॉर्मर्स लाइक जो भी आपको नाम देना है, ठीक है, लाइक सो एंड सो राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले could have stayed in the comfort of their houses. या फिर आप थोड़ा और सा ग्राफिक बनाना चाहते हैं, कंफर्ट ऑफ देयर हाउसेस ही लिख लो, ठीक है, होम्स, बट दे स्टेप्ड आउटसाइड. अब मैं सोसाइटी की जगह यहाँ पे थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, टू स्टेप आउटसाइड टू फेस
मतलब टू टू fight unruly mobs for the rights of so and so. They even they risk their own lives. So and so. अब ये थोड़ा थोड़ा जो वर्ड है ना, एक यहाँ पे वर्ड्स कैच करना, कंफर्ट ऑफ देयर होम्स या फिर अन या मॉब्स, ये दो तीन, ये सिर्फ ये दो वर्ड्स ही ना यहाँ पे। अब जब आप इसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो एक भीड़ दिख रही होगी इस सेंटेंस को, इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए कि घर के बाहर भीड़ खड़ी। आर गेटिंग दिस थिंग? घर के बाहर एक भीड़ खड़ी हुई, इस जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो Contrast. हाँ, कॉन्ट्रास्ट भी दिख रहा है और वो इमेजिनेशन भी हो रही है। तो ये अभी मैं आपको जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, कभी कभी अगर हो पाए तो बहुत ही पर्टिकुलर हो जाने से ना चीजें बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से हो जाती हैं। और सा ग्राफिक करना हो, मैं इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। अब हो सकता है ऐसे में इतनी रिक्वायरमेंट ना हो, फिर वो नॉवल जैसा बनने लगेगा, पोएम जैसा बनने लगेगा, जैसे एकदम से वो आता भी नहीं। अनरूली मॉब्स ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, कॉमा लगा के, रिस्किंग देयर लाइव्स टू फाइट फॉर व्हाट दे थॉट वाज राइट। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके, अब अगर अच्छी से लाइंस मुझे लगा कि ये बनने लग रही हैं, तो फिर इनको मैं इंट्रो के तौर पे कहीं पे आप या कहीं पे पंच इफेक्ट देने के लिए उनको यूज कर लेता। आप समझ रहे मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप कि ये जो वर्ड्स हैं थोड़े थोड़े जो हम स्प्रिंकल कर रहे हैं, होम्स, मॉब्स, स्ट्रीट्स, इसने एक प्लेन टेक्स्ट में थोड़ी सी जान डाल दी, उसे थोड़ा सा थ्री डायमेंशन में रीडर उसको देखेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप थ्रू आउट अपने ऐसे में करो, एट बहुत ही फास्ट पेस पे कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो होने लगेगा आपका। जैसे अभी जब कॉस्मेटिक्स वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की, कॉमोडिफिकेशन ऑफ ब्यूटी की बात हो रही थी, तो वहां पे थोड़ा सा अगर आपने कुछ कंपनीज के नाम लिखे होते या फिर फेयरनेस क्रीम्स का फॉर एग्जांपल नाम लिख दिया होता, फिर कंपनी सेल फेयरनेस क्रीम्स, कुछ इस तरीके का, तो वो विजुअलाइजेशन होने लगती है उनको, वो चीजें दिखाई देती हैं वहां पर। तो this is there are some examples, कुछ और स्टूडेंट्स जो लिख रहे हैं यहाँ पे। How will you see the chat? Yeah, so Bhagat Singh, he was so literate, learned man. He could have been, he cracked ICS exam and must DM bunch. अच्छा ऐसे मस्त डीएम बन सकता था। आई होप, ठीक है। आई वंडर अगर सच में कहीं ऐसा लिखे, अगर सेफ एंड नहीं सर, सिक्योर ऐसे है। लिखूंगा नहीं, बस यहाँ पे एक थोड़ा इनफॉर्मल वे में लिख रहा था। या आई गॉट, आई ऑब्वियसली इट्स कॉमन सेंस। एंड उसने कितना सारे रिलेशन जिंदा कर दिए, राइट? एग्जैक्टली, ग्रेट, वेरी गुड पॉइंट। Great thinker had shown courage to go beyond traditional collective conscience to rational and human society, right? Gautam Buddha, he could have been a great prince, and this and this could, instead of sleeping on the cozy bed of palace, he could, right. देखो इस तरीके का विजुअलाइजेशन है ना, जैसे अभी अब वैसे ये बात भी है, थ्रू आउट द ऐसे लिखोगे तो ये ज्यादा हो जाता है, लेकिन बीच बीच में या इंट्रोडक्शन में या कहीं कहीं पे लोगों को एनेक्डोट्स बनाने का एग्जाम्पल होता है ना, तो आपको वहां पे ऐसे थोड़ा सा ग्राफिक सा करना है। With the poor, he created so many moms. ठीक है, right? Okay. So we would come back here to the discussion. अब यहाँ पे थोड़ा आज आप लोगों को एक टॉपिक दिया था, थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। What was the topic that was given to you? Sir, Yes. can we end it? Recent discussion, can we end that calculated risk can be taken?
Risk is necessary, but we have to take it very calculatively. कैलकुलेटेड नहीं या थॉटफुल, हाँ मतलब थॉटफुल रिस्क, या तो एथिकल ऐसे बोल सकते हैं रिस्क, कि courage हाँ has to be in conjunction with other values such as ethics and all that other values. ये थोड़ा ज्यादा Compassion. ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ये वाला जो कंक्लूजन है जिसमें आप ये वाली जो बात बोल, दिस इज बेटर, स्लाइटली बेटर। ठीक है श्रीविनी, तो कंक्लूजन अभी मैं मेरा पर्पस वो वाला ये नहीं था कि मैं वो वाला टॉपिक बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूं, इट वाज जस्ट ए मतलब कर्सरी। आप ये मत सोचिएगा कि उसका हमने डिस्कशन कर लिया है, वो अपने आप में उस टॉपिक में बहुत कुछ लिखना होता, लॉट कुड हैव बीन रिटन इनटू दैट टॉपिक। So when will we talk about introductions and someday, मतलब किसी भी टॉपिक के बीच में करते करते वी विल डिस्कस व्हेन टाइम परमिट्स, थोड़ा सा थोड़ा कर लेंगे अभी इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर अगर ऐसा है तो। सर आपने जो टॉपिक दिया है उसी का इंट्रोडक्शन मतलब लेट्स ट्राई टू फॉर्मुलेट इंट्रोडक्शन फॉर इट। ये मैन क्लॉग्स हिज हैप्पीनेस बाय डिस्ट्रॉइंग what is with thoughts of what may be. Should we attempt to या वो टॉपिक इसीलिए दिया गया था आपको थोड़ा सा, इसीलिए फॉर दिस रीजन ओनली। सर या सो लेट्स come with the topic. What was the topic? Can someone tell out? जो आज आपको man clogs his happiness. 1 second. Man clogs his happiness by destroying what is with thoughts of what may be. With thoughts of what may be. Right. See, okay, let us talk about introduction then. How to write introduction of a topic. There are many ways in which you can write introduction. And I think one of the most effective way of writing an introduction is to do paraphrasing. When you can paraphrase that topic, that is one of the best way, one of the most robust way. It's not necessarily the most attractive way, but it is definitely one of the most robust. It will never fail. This if you can paraphrase the topic. Paraphrase the topic means that when you can repeat the central idea of the topic in your own words, when you can and how do you do that? One is you temper with the structure of the sentence. For example, if it is active voice, you can make it passive voice and so on. A little structure of the sentence you can modify. Instead of writing one sentence, you can write 3 sentences to say the same. In this way, you can do a little bit of tempering with the structure. And in the second way is that you change the words. Think of some synonyms. Like for example, if the word is clogs here, then what other synonyms can be? Obstruct, for example, hijack, block, and so on. Chalked and so on. Okay, what can be happiness? Pleasures. Okay. So in this way, if I had to say this thing, that we often come across scenarios in our life, and now instead of man, I would have said we. So we often come across scenarios in life where we miss out the pleasures of our life, or when we block the access to the pleasures of our life, or when we cannot enjoy the pleasures of our life because we are too much, अब with की जगह मैं कुछ और वर्ड यहाँ पे लेकर आऊंगा, maybe like obsessed, because we are too much obsessed with what maybe का क्या मतलब है future. So how I will paraphrase this in line, that quite often we come across such times in our life where we are obsessed with the future and we lose sight of the present.
and or we are not able to derive pleasures of what the present has to offer to us. This is an example of paraphrasing. आपने उसी मीनिंग को अपने वर्ड्स में लिख दिया, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज से शायद 5 साल पहले मैंने ऐसा ना बोला होता, लेकिन आज बोल रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ पैराफ्रेजिंग इज सो रोबस्ट बिकॉज व्हेन टॉपिक्स आर रियली वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी ब्लरी, तो वहां पे अगर आप एनेक्डोट लिख देंगे या कुछ और लिख देंगे तो फिर उसके उस चीज के थोड़ा सा मिस फायर होने के चांसेस रहते हैं. आप पैराफ्रेजिंग करेंगे तो इट इज आई वुड से वेरी रोबस्ट वे. बट पैराफ्रेजिंग आपने यहाँ पे सपोज एक अपने एक वर्ड्स में इसको लिख दिया, ठीक है. सपोज हम इसे कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 आपने लिख दिया. अब थोड़ा और अच्छा वे क्या हो सकता है कि ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर स्टेटमेंट और सम अदर थॉट फ्रॉम विच दिस कैन बी डिराइव्ड, स्टेटमेंट 1 कैन बी डिराइव्ड. यू रिमेंबर आपने से अगर कभी किसी ने कैट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है तो यू माइट हैव सीन दिस थिंग कि वहां पे तो कभी कभी ऐसा होता था वेयर यू हैड टू वेयर यू वर गिवन 4 sentences and you had to and they were jumbled up and you had to put them in a sequence कि कौन से सेंटेंस के बाद अगला सेंटेंस आएगा. थोड़ा थोड़ा वैसा कि इमेजिन करिए कि ये वाला सेंटेंस है, ये वाला जो थॉट है, इससे पहले का सेंटेंस है, पहले का थॉट क्या होता. नाउ टू गिव यू एन एग्जांपल, सपोज आपको ऐसे लिखने को दिया जाता है काउ की इकोनॉमिक यूटिलिटी पर. मुझे मालूम है यू विल नेवर गेट एन ऐसे लाइक दिस, बट आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम टेलिंग यू काउज इकोनॉमिक यूटिलिटी. So what you would have been writing that cow is a very that cow is has many economic benefits for the people who domesticate her. लेकिन ये फ्लो किससे कर रहा है? ये फ्लो किससे कर रहा है? काउ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल या वेरी हॉली एनिमल या वेरी की इंग्रेडिएंट ऑफ इंडियन कल्चर, वहां से कर रहा है. यानी कि वो सिंपली काउ के ऊपर से डिराइव कर रहा है. अगर ऐसे काउ के ऊपर होता तो आप एनिमल के थॉट से शुरू करते. आप यानी कि एक स्टेप पीछे जा रहे हैं और फिर उससे अगले स्टेप पर आकर यानी कि सेकंड पॉइंट पर आकर आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे. आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इन ए वे इसे ऐसा इमेजिन करिए कि एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है. ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है, यहाँ आपका टॉपिक रखा हुआ है बीच में, और आप एक स्टेप पीछे या 2 स्टेप पीछे जाकर उस आइडिया को कैच कीजिए जिसके आइडिया से ये वाला टॉपिक फ्लो कर रहा है या जिससे लिंक किया जा सकता है. यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ. जैसे सपोज अगर टॉपिक है इनोवेशन के ऊपर, तो व्हाई इज इनोवेशन सो इम्पोर्टेंट? maybe one reason can be that change, because we are always changing. We are a society where change is the fundamental law of nature. तो आप बात करिए चेंज की कि चेंज इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर. वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर नथिंग इज स्टेबल, वेयर एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी सेकेंड. We don't know what will happen tomorrow. In this scenario, it is very important that we अब innovate के जगह कुछ और word use करो जिसका synonym था, that we update ourselves or we try to find newer ways of our existing problems, because we are surrounded by newer problems with every passing day. और फिर आप वहाँ पे उस चीज़ को brainstorm सा कर दो. यानी कि अब यहाँ पे काउ एनिमल को छोड़ते हैं, वो तो मैंने आपको कोई ऐसे ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल दिया था. अब यहाँ पर इमेजिन कीजिए कोई यहाँ पे फिलोसफिकल टॉपिक है, इसकी पेरेंट फिलोसफी जो होगी या इसकी कोई सिबलिंग फिलोसफी होगी उसको थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, फिर इसके ऊपर आइए. दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग का थोड़ा सा एडवांस लेवल. अब यहाँ पर अगर आपको और इम्प्रोवाइज करना है, इफ यू वांट टू इम्प्रोवाइज इट फर्दर, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन इंट्रोडक्शन को हमें थोड़ा सा पावरफुल बनाना है. वी हैव टू मेक इंट्रोडक्शन पावरफुल. How can we make introduction powerful? Or how can we make introduction very catchy? सर हाँ, एक ये जो टॉपिक था जो अभी डिस्कस कर रहे थे, उससे मैं सेम जो आप बता रहे थे, मैंने सोचा कि क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, सो पहले मैं फ्यूचर से स्टार्ट करूँ कि सिंस टाइम इमेमोरियल फ्यूचर हैज ऑलवेज बीन ऑब्जेक्ट ऑफ एनाग्मा एंड एनाग्मा फॉर ह्यूमंस. और उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा फ्यूचर का एक बैकग्राउंड देख के बताऊंगा कि हाउ समटाइम्स गेटिंग ऑब्सेस्ड विद फ्यूचर
prove detrimental to our present. तो मतलब अभी मैंने proper language नहीं सोचा how I'll structure it, but उस तरीके से मैं उसको structure करूँ. So is it okay? परफेक्ट परफेक्ट। तो आप चाहे हैप्पीनेस को आप चाहे एक्सप्लेन आप चाहे फ्यूचर से करते, चाहे आप पास्ट से करते फिर उस पर आते, चाहे आप कुछ भी करते, चाहे आप फियर से करते, एंग्जाइटी से करते, कोई कोई सिबलिंग आइडियोलॉजी या कोई पेरेंट आइडियोलॉजी, वहां से शुरू करके हम यहाँ पर आ सकते हैं। वेरी वेरी राइट वैभव, वन वेरी गुड वे। So can I so link can it we to past? use happiness like explain happiness and then how if we are only thinking about future then we are not at a state of mental peace that affects our happiness. कर सकते हो। ये कौन बोल रहा है? Who is talking right now? पंकज। Sir Pankaj. हाँ पंकज, कैन यू कम, चेहरा दिखा सकते हो अपना? Sir? कैन यू शो योर फेस पंकज? Yes sir. राइट देखो, चीज़ों को डिफाइन करना ना, आई एम नॉट वेरी फैन ऑफ इट। मतलब चीज़ों को पहले डिफाइन करो या समझाओ कि क्या होती है, उससे थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। थोड़ा सा चीज़ों को, और स्पेशली ऐसे वर्ड्स जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। हैप्पीनेस क्या है मोर और लेस लोग जानते हैं, समझ रहे हैं? अगर टॉपिक ऐसा होता है रैशनैलिटी के ऊपर, तो रैशनैलिटी क्या है, आपके आपके डेफिनेशन ऑफ रैशनैलिटी या आपके डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म, ये थोड़ा अलग अलग वेरी कर सकती है। और दूसरा यहाँ पे बात आप सही कह रहे हैं, वो तरीका गलत नहीं है, लेकिन किसी वर्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना, एक की टर्म को, वो बहुत ही ट्रेडिशनल सेंस में ऐसे को लिखने के लिए एडवोकेट किया जाता है, बट आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ इट। मुझे लगता है वो थोड़ा सा ऐसे को थोड़ा सा शुरू में बोरिंग बना देता है, फिर एग्जामिनर के माइंड में रहता है ये तो मुझे पता है, आगे 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 बोलो। आर यू गेटिंग पंकज? Yes. राइट। So related question कि like you were talking about paraphrasing, but suppose वो examiner जो है he will be checking like 15-20 copies, and what I've seen from toppers copy कि most of the time people don't use paraphrasing. So उसको मतलब अगर दूसरे कॉपीज में वो anecdotes पढ़ रहा है या stories या quote, तो ये वो ज्यादा अच्छा लगेगा कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा? देखो मैंने पैराफ्रेज को के बारे में ये कह रहा हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट वे, और आप किसी भी तरीके से शुरू कीजिए टॉपिक को, इट इज़ योर चॉइस, लेकिन पैराफ्रेज तो आपको करना ही है, करना ही 100%। व्हाट आई मीन इज, हो सकता है कि आप एनेक्डोट से शुरू करें, हो सकता है आप किसी कोटेशन से शुरू करें, हो सकता है आप किसी सॉन्ग से शुरू करें, कुछ क्वेश्चंस पूछ कर शुरू करें, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ के बाद आते आते कहीं ना कहीं बीच में आपको वो पैराफ्रेज भी ऑटोमेटिकली करना ही पड़ेगा, वो लिंक दिखाने के लिए कि हाउ योर एनेक्डोट और सॉन्ग और पोएम और व्हाटएवर इट वाज इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। एंड वन थिंग व्हिच आई सी वेरी ऑफन इज कि स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, और एटलीस्ट दे आर नॉट एबल टू कन्विंस द रीडर दैट दे हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सो पैराफ्रेजिंग इज अ सेफ्टी नेट। आपने अगर टॉपिक में कहीं पर स्पेशली शुरू के कुछ पेजेस में अगर पैराफ्रेज कर दिया, तो आपने एग्जामिनर को इस चीज की तो का दिलासा दे दिया ना कि देखो टॉपिक समझ में आ गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम्युनिकेट टू द एग्जामिनर दैट एटलीस्ट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। अदरवाइज एक अच्छे स्कोर की जगह आपका स्कोर नीचे कम भी हो सकता है। तो आई एम नॉट सेइंग पैराफ्रेज इज द बेस्ट वे, वो आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएगा, लेकिन वो आपको एक सेफ्टी जोन में ले आएगा कि उससे नीचे हम नहीं जा सकते। मेरे पास स्टार्टिंग करने के लिए बहुत तरीके हैं। अभी मैं आपको इसे का अगर मैंने लिखा होता, कैसे लिखा होता, आई विल शो यू। इट इज नॉट पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग वहां पे थर्ड पैराग्राफ में आएगी, कहीं ना कहीं पे वो वहां पे भी पैराफ्रेजिंग होगी। Sir, actually, can I speak? Sorry. राइट राइट। Yeah. So I'm a journalism student. हम लोग जब articles वगैरह लिखते थे, तो what I used to do was often use this technique of paraphrasing. So I'm very comfortable with it. So, but मेरे को I want to use this technique, but थोड़ा सा I was a little fearful कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी लोग anecdotes और सब लिख रहे हैं। आप एक बार सामने आ सकते हैं वैभव? या अगेन वैभव, सी पैराफ्रेजिंग आप कर सकते हैं, और एनेक्डोट को अगर आप यूज कर रहे हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ वेल एंड हाउ गुड यू आर इन टर्म्स ऑफ constructing your sentences and creating the characterizations, art of narration. There are other 100 of parameters which will decide how effective your anecdote would be or not. And I am telling you with a perspective of examiner right now, when I'm running this test series or previous year, what I have seen a trend
in the recent years that 8 out of 10 students are using anecdote. Anecdote was very uncommon 4-5 years ago, but it is not uncommon today. So now anecdote is no more as attractive and as appealing as it used to be a few years ago. Are you getting this thing? So that's why I feel ki somehow anecdote is overrated thing of starting an essay, and especially those fictional stories, because there are two things. One, it has become very common, and the second thing is that students are not very effectively able to write an anecdote. Our students do not even know how should we name the characters. फॉर एग्जाम्पल वो बात कर रहे हैं एक बहुत ही पुअर लड़की की, मैलनरिश लड़की की, नाम रख देंगे उसका रिया. अब रिया नाम रखा है और गरीब लड़की, ट्राइबल लड़की की बात कर रहे हो तो फिट नहीं होता ना. आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आपने क्या नाम रखे हैं, आपने क्या लोकेशंस रखी हैं, आप कौन सी चीज को छुपा रहे हो, कौन सी चीज को आगे रख रहे हो, ये सारी चीजें मिक्सअप होती हैं. देन वी अंडरस्टैंड हाउ वी कैन क्रिएट अ वेरी फैंसी, वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट. It is possible for you to learn it. I'm not saying you can't learn it. You can, but that is not the, I would say कि best way. और मैं बहुत कॉपीज में ये चीज देख रहा हूँ कि कई बार स्टूडेंट्स डेविएट कर जाते हैं, कोटेशन कहीं की होती है, लिंक कहीं और कर देते हैं. तो इन सब, वैभव यू आर ऑन म्यूट एक्चुअली, आई कांट हियर यू. सर मेरा वही पर्पस था, बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस टेक्निक बिफोर ऑफ पैराफ्रेजिंग. आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस टेक्निक. एंड सेकेंडली विद पैराफ्रेजिंग द एडवांटेज इज कि आप ना टू द पॉइंट बात करते हो. अब आप सीधे, आपने स्टार्ट वहां से किया, आपने पैराफ्रेज कर दिया. अगर आप कंटेंट में बहुत अच्छे हो तो आप पैराफ्रेज करने के बाद ना बहुत ज्यादा कंटेंट लिख सकते हो, बिकॉज यू आर लेफ्ट विद लॉट ऑफ स्पेस. तो अब आप अपने कंटेंट को बहुत एनरिच बनाकर प्रेजेंट कर सकते हो. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नॉट डेड, आई वुड से. ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, ये पैराफ्रेजिंग इज नॉट डेड. इट इज वेरी मच रिलेवेंट इवन टुडे. And I'm going to tell you furthermore on this, how you improvise introduction. अब improvise करने के लिए देखो, मैं किसी और दिन आपको क्लास में बताऊंगा how to introduce. बहुत लंबी क्लास होनी चाहिए. How to make an introduction, at least I need 1 hour. और अभी ये क्लास खत्म होने वाली है हमारी, तो अभी we will not be able to do justice to this thing. But एक जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर उसी पैराफ्रेजिंग में शुरू में if you are able to use very powerful words, very catchy lines, then the same paraphrasing can become very interesting. अब आप कैसे वो कैची लाइंस करते हो, मैं थोड़ा सा उस पर मे बी अगली नेक्स्ट क्लासेस मुझे रिमाइंड कराना कि आप एक पॉइंट को कैसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो. तो इंट्रोडक्शन को हम यानी कि पैराफ्रेजिंग जो हम कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स वहाँ पे यूज करेंगे. सेंटेंस में थोड़ा सा पोएटिक इफेक्ट डाल सकते हैं ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि ये एक नए तरीके से इसने इस चीज को लिखा है. Again, you are on mute, Vaibhav. Sorry. It's okay. No, sir. I am good at it. I feel comfortable at it. But I was bit scared कि कहीं कोई disadvantage ना हो जाए. But now after you have explained it so succinctly, I believe that I can use it. Right. How to make an introduction, उस पे मेरा एक वीडियो है YouTube पर, उसमें 6-7 तरीके से मैंने दिखाया है कि आप कोई प्रोवर्ब को यूज कर सकते हो, आप किसी सॉन्ग को यूज कर सकते हो, आप बहुत तरीके से कोटेशन को यूज कर सकते हो, कोई स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो. लेकिन इन सब चीजों के साथ जो लिमिटेशन है, प्रोवर्ब, सॉन्ग, ये लिमिटेशन है कि या तो आपको पता है एग्जाम के टाइम में या फिर नहीं पता है. और कई बार स्टूडेंट्स प्रेशर में इन्हें रिकॉल नहीं कर पाता. बट आई बिलीव कि अगर आप माइंड को बहुत ही फ्री छोड़ दें तो कुछ ना कुछ याद आ जाता है. और अगर आपके अंदर लिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, इफ यू कैन लिंक एनीथिंग टू एनीथिंग इन योर लाइफ, यू विल नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड कोटेशंस, बिकॉज यू हैव दिस फ्रीडम कि आप किसी भी पॉइंट को किसी भी चीज से लिंक कर सकते हो. यानी कि कोटेशन अगर थोड़ी सी हट के हो भी गई थी, आप उसे लिंक कर दोगे पैराग्राफ ऐसे के सेंट्रल आइडिया से, फिर आप आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हो. लेकिन अगर आपकी ये लिंकिंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑफ आइदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल और एनी अदर रीजन, एंड इफ यू डू नॉट हैव गुड डाटाबेस ऑफ दिस कोटेशन, देन आई वुड से कि फिर इनके चक्करों में मत पड़ो, फिर आप पैराफ्रेजिंग से शुरू करो. बट अगेन आई विल टेल यू, वी ऑल हैव ए वेरी गुड स्टॉक ऑफ quotations and songs. We all have it. At least अगर आप movies या songs थोड़ा बहुत देखते हो, like this topic which I've given you, man clogs his happiness by destroying what is with thoughts of what may be. I can remember so many songs of Bollywood which
have the same idea like this. Can anyone share? तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल Yeah. क्या हो किसने जाना। Exactly. जिंदगी दो पल की। ये किसने बोला है जिंदगी दो पल मैंने। की? आओ सामने आओ एक बार। कौन सी लाइन है पूरी बोलो वैभव, अनम्यूट योरसेल्फ। जिंदगी दो पल की, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ये ऋतिक रोशन वाला तो नहीं है ये जो नया आया अभी? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो फिर ठीक, पुराना गाना है, 60-70 का, कि हाउ फिर ठीक है, जो फिर मतलब ठीक है। कि लाइफ इज शॉर्ट एंड यू हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट, कि राइट, जिंदगी दो पल की। फिर ठीक है, एग्जैक्टली यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि ऋतिक रोशन या इस तरह के नए हीरो से गाने को थोड़ा अवॉइड करना। एक पल 70s का कोई सॉन्ग। 70s 60s 50s तो थोड़े ज्यादा अच्छे रहते हैं वो क्योंकि एज आई सेड ना, ह्यूमैनिटीज मैंने आपको बताया था, देयर इज ए डिजायर फॉर द लॉस्ट, नॉस्टैल्जिक हैं लोग आज भी डेट में, काश पुराना वापस आ जाए 1960s 70s में। तो वहाँ पे बहुत गाने हैं, उसमें से आप कोई भी आपको याद आता है? एक सॉन्ग था आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसको एक सॉन्ग है ना सर। तो अगर आपको सॉन्ग्स का थोड़ा पसंद है और आप फिलोसफिकल सॉन्ग सुनते हैं तो आपको बहुत सारे गाने मिल जाएंगे जो कि इस एसे को रिपीट करेंगे। और देखो एक ऐसे आया था कुछ टाइम पहले, माइंडफुल मैनिफेस्टो, वो वाला ऐसे बहुत ज़्यादा इस तरह के थॉट्स को मैच करता था। तो वाई वी नीड माइंडफुल मैनिफेस्टो, वाई वी नीड दोज थिंग्स इज वेरी रिलेवेंट टुडे। तो दैट कुड हैव बीन अ वे टू स्टार्ट दिस ऐसे कि आप उस सॉन्ग को अगर लेकर आ जाते, ठीक है, उसकी कुछ लाइंस लिखते हैं रोमन लेटर्स में, फिर उनको पैराफ्रेज करते या ट्रांसलेट करते और फिर उसको नीचे के ऐसे से लाते हुए लिंक कर देते। ये जो सॉन्ग है उसको आप फिर लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ये देखो अब यहाँ पे सपोज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ इस हिस्से को, आई विल जस्ट शेयर विद यू द इंट्रोडक्शन, just like 5-10 minutes before the class began I thought to write it, so you can see it here. See, paraphrasing तो यहाँ पर होगी ही, ये रही पैराफ्रेजिंग इस टॉपिक की। वैभव या कोई पूछ रहा था ना मुझसे, तो पैराफ्रेजिंग तो होगी, चाहे वो बिल्कुल पहला फर्स्ट पैराग्राफ से करो चाहे वो बाद के पैराग्राफ से करो। पैराफ्रेजिंग करनी बहुत जरूरी है बिकॉज उसके बिना आप एग्जामिनर को समझा नहीं सकते कि टॉपिक है क्या। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप शुरू में कई और चीजें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है सिंस थोड़े हेवी वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशंस humanity has been perplexed with questions such as should we be enjoying the beauty of the present or should we be investing our efforts in making the future more beautiful than what exists today। देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड वाला रिपीट नहीं किया गया है जो कि टॉपिक में पूछा गया था, वर्ड्स दूसरे रखे गए हैं। should our eyes look beyond the horizon where we want to be or should our eyes be glued to the land beneath our feet। in this dialectics of what we have versus what we desire, between the future and present, between the fiction and reality, we find our whole life being spent and done. Quite often when we are obsessed about our future, we end up ruining our present. This future could be either a collection of dreams or a leap of nightmares। Now see, this point is this is paraphrasing the topic, and while writing this point, I'm also connecting this to the previous paragraph. Fear of unknown and fear of what we imagine would happen, and fear of what we imagine would happen take us away from the pleasures of present। Now there are some examples with which we can move forward in the now we have entered into the body of the essay। यहाँ तक इंट्रो चल रहा था, यहाँ पर आपकी बॉडी शुरू हो गई है, एंड दिस इज हाउ यू मेक ए वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। अगर इस ऐसे में एग्जैक्टली आप बोलो तो आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, बॉडी उससे यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ से शुरू हो गई हो। शुरू में इंट्रो था, बीच में कहीं आके अचानक से बॉडी वाला पार्ट शुरू हो गया, आप बता नहीं सकते कि बॉडी वाला पार्ट कहाँ से शुरू हुआ है। दिस इज हाउ वी मूव स्लोली, एंड दैट इज व्हाट आई से इन एसे राइटिंग। जो वो लोग बिल्कुल इंट्रो बॉडी कंक्लूजन 3 पार्ट में हेडिंग्स डाल के सेपरेट करते हैं, इट्स अ वेरी बैड वे ऑफ राइटिंग बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट लूज आउट हो जाता है। आप इस ऐसे को शुरू से रीड करेंगे तो कहीं बीच में ब्रेक नहीं आएगा, ऐसा लगेगा हर पैराग्राफ अगले वाले पैराग्राफ से कनेक्टेड है। So what I was telling you, quite often when we are obsessed about our future, we end up ruining our present. This future could be either a collection of dreams or a heap of nightmares. Fear of unknown and fear of what we imagine would happen take us away from the pleasures of present. For example, it is a fact of life that we all have to die one day. Anything that
was ever born will perish for certain is a law of nature. On every passing year of our life, we have a choice either to rejoice in celebration like birthday or to fall in anxiety like looming death. And then you can go on. आपको आज कैपिटलिज्म का एग्जांपल बताया, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ कैपिटलिज्म इज इन्फ्यूजिंग ग्रीड इन अस, is greed for more and more, and it makes us dissatisfied with what we have. You can talk about families, how families are breaking apart, splitting with tensions because people, they have distrust over each other. They are afraid of something bad will happen. Some families break down because partners believe that they would have divorce, and the fear of divorce, it kills their present moment. We can talk about how politicians around the world are instilling fear, and so on. Song Aane Wala Pal and so on. This is the brainstorming, and in this way you could have moved forward. Somewhere towards the end, you could have also discussed the contrary of this essay, that if there are no dreams, then what will draw us forward? What will keep us moving forward? Like if there were no dreams, if there are no desire for a better future, or if there is no desire to save ourselves from the risk of a future accidents, then what will happen? Would humanity have been, would humanity progress? If Gandhi and Bose had they not dreamt of a future of free India, would we have been free today? Like this, we can talk about. Now, we could talk about suicides, we could talk about youth depressions and so on. See, one way of starting this essay, if you ask me like how else you could have started, this is how I have started this essay. Another way of starting an essay, if you are good with statistics, you could have given a statistics of how many suicides take place every day or every year in India. Okay. But there is a way of how you present these statistics. Instead of saying that India mein suicide rate is 11%, yeah, 11 per lakh, whatever it is, what you can say is that start your line like this with a very, very stunning remark or very stunning idea like this, that by the time you read, by the time you read, or by the time you have read this essay, one person somewhere in India or one student somewhere in India would have committed suicide as per the rate of suicides presented by NCRB. This is the level of mental tensions in our country. And one of the reasons for that is that we are obsessed with the future, the anxieties of the future, and that is taking a toll on our mental health and on our life. So these are ways where how you can start the essay. Sir, I have actually prepared some points for this. So a couple of points apart from what you have told. So one point I have written about. I will come to it, Vaibhav. Just hold on. Okay, I will come to it. We were talking about introduction, so let me complete this discussion around what is introduction. See, the questions which have been asked here: should our eyes look beyond the horizon where we want to be, or should our eyes be glued to the land beneath our feet? So what I'm telling you, one way to start the introduction is you can also ask questions. There are hundreds of ways of starting essays besides anecdote and besides paraphrasing. You can also start questions like these. Okay, like here also there is a question. Should we be investing our efforts in making the future more beautiful? So asking question is one way of starting an essay. Ask questions. Second is your language. If you can improvise your language, and how we improvise our language, a skill maybe some other day I will tell you. I will use the same example, but that day I will tell you that how to write like this. There is a very scientific way how you can construct sentences which are as appealing as these. If you practice them, you will be able to do that. But it's 10 p.m. now around. We have to wind up. And Vaibhav also want to say, and any of you would be ready to say something about this topic. So let us keep some time for that. And how to construct sentences like that, one day we will be discussing this, possibly in the class related to presentation skills. Okay. Sir, just one question I had to ask. Right. Like when we had some Hindi songs or quotations in the Roman script, so do we also need to explain that in English? Exactly. Yes, of course. Very much important.
नहीं नहीं, ऐसे एक दो पीस तो लूंगा ही, बट नहीं खाऊंगा. if you write something in Romans, you have to write anything in Roman, irrespective of which was the language. You never write in Urdu or Devanagari. You have to write in this. And also explain that. Yes, you also have to explain it. At least the central idea, if not word by word translation, at least paraphrasing of what you said or the central idea of that poem or those in lines. in bracket, something like that. Not bracket. Like suppose, very simple, like suppose if you write like this, that aane wala pal jaane wala, not like this. Like this, aane wala, like you write like this, okay? If you once you have written this, that these lines drawn from a popular cult song of 1960s to 70s suggest, या तो आप यहाँ पे उसका आइडिया कर दो, एक तो ये तरीका है, या फिर यहीं पर या फिर ये ऐसे आप इस इन लाइंस के नीचे लिख सकते थे, which can be translated as, फिर आप यहाँ पे 2-3 लाइंस में लिखते कि the moment which is about to come will lapse at any point of time, and all that you can do is hold on to the moment which is there and enjoy it. Are you getting? तो आप पहले इंग्लिश में से 4-5 लाइंस में लिखो और फिर ऐसे लाइन लिखे which can be translated as this, 3-4 लाइंस में उसको उसका ट्रांसलेशन लिखो. लेकिन जब इसे लिखते हो ना तो थोड़ा सा ना इंडेंटेशन का ख्याल रखना और इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप एक कोटेशन से यूज कर रहे हो और यू आर राइटिंग समथिंग व्हिच डज नॉट बिलोंग टू इंग्लिश लैंग्वेज. थोड़ा सा उसको वो चीज़ हाईलाइट करने के लिए. या और सेफ खेलना चाहते हो यहाँ पे, तो फिर ये वाली जो लाइन है ना, दीज लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ए पॉपुलर कल्ट सॉन्ग, इसको पहले लिख दो. देयर इज अ पॉपुलर सॉन्ग in Indian movie industry. Yeah, there was a popular song in 1960s and 70s whose lyrics were, the 4 लाइन लिखो, which can be translated as, वो 4 लाइनें लिखो और फिर उसे कनेक्ट करो कि the central idea of this songs was that we should be living our life in the present moment and not be obsessed by what has happened in the past or what would come forth in the future. Essay. Is it okay? The person who asked the question? Yes, sir. Who had asked this? Sir, Saket. Yeah, okay, Saket. So, with this, we will be moving towards the closure. Okay. Hello, sir. Yeah, there was a person who wanted to add his content on this. Yes, sir. So since you talked about technology, capitalism, how professors it tested, so मैंने उससे related एक point आप सामने आ जाओ एक बार, वैभव. Yeah. So, sir, I had written a point related to technology and capitalism. So the point was that how because of the possibilities that technology and capitalism hold in future, we are ignoring the issues that they are causing in the present, such as inequality, data colonialization, and how it is harming us. Another point which I had written. But this seems to contradict the topic. How? Because no, I was written how because of yeah, sorry, I didn't realize it. Sorry. So another point उससे related था कि how fear of future countries like China. So what they have done because of fear of population explosion, it compromised their ability to think clearly. So they adopted a radical approach in the form of one child policy, which now has resulted in a disbalance of their population. So this way, I've showed how the fear of future made them adopt a radical. वापस आओ ना यार, वापस आओ. तुम कौन हो यार? तुम हम लोगों के साथ में से एक नॉर्मल से इंसान हो, इंसानी बातें करो. क्या ये देश, हुकूमत, इन सब मतलब it's not that you are wrong in these ways, but don't be just obsessed about them. Where are these layman languages, layman examples which everyone can connect to? I told you, you were there in the yesterday class or not? Yes, I was. I'd said now that
Think of the examiner as a person who's a very layman. Think that you are talking to a person who's of say 10th class 12th class. अपनी छोटी बहन भाई हो उसके बारे में सोचो, क्या एग्जांपल दोगे उसको? वो अगर आती भैया भैया ये मेरे को समझाओ, ये टॉपिक है, या भैया ये बताओ ये क्या है, तो उसे क्या समझाओगे, कैसे एग्जांपल दोगे? एक लेमैन से एग्जांपल दोगे उसको, उसकी ही लाइफ के एग्जांपल्स दोगे. Okay. ये Sir, ये can I भी try one last? okay. And one thing, there's a point. Right, we will talk about basic philosophies in our some, there are some important themes मतलब जो हम देखेंगे उसे तब तक in the next session, मतलब next to next session. लेकिन उससे पहले आपका मैं एक टेस्ट करना चाहता हूँ. Rohit has asked this thing, एक basic philosophy, he was waiting for this. So there is a test which you all have to give tomorrow. Okay, once you have given that test, we will discuss a philosophy which is related to that. Okay. Yes. Sir, I have a request, sir. I have a political science lecture to attend at 8. So it becomes difficult for me to attend both these sessions. So, like, is it possible for a reschedule, or like should I go with seeing the recorded lectures? Just give me 1 week, like with the beginning in the next month, with the beginning with when July begins, I will be able to hold session at any point of time if you people agree. Sir, okay. And, Okay, and sir. that can be 6 p.m. or maybe I may even schedule it in the morning hours or on the noon hours. Okay, when there is a lot of daylight and all. Okay, sir. The Thank you. ideal time which I think is around 4 p.m. when you have studied something in your first half of the day, and you are left with still some more energies. Sure. But we will figure out that out. I think 4 p.m. or 5 p.m. that kind of a time I would look forward, or I will confirm on that the next month. Okay. But right now, these 2 classes have been held. Now, the next step is your test. This test would take around 3-4 days. I mean, 1 day for you to write, and 2-3 days or 4 days for me to evaluate all of your answer sheets. So write your test. Tomorrow, you all would be writing the test. You are available to write the test tomorrow, na? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, 9 Yes, sir. 9 a.m. 8:45 a.m. tomorrow. I will send you 2 topics. On those 2 topics, you have to write essays. Okay, try to write essays on that. In case if you are really blanked out, it's okay, but try as much as you can. I know that those topics will throw you out of comfort zone, but that is what the purpose of the test series is. I want to throw you into cold water where you feel uncomfortable, so that when you come out, you really have some very good learning lessons. And there are 2 kind of students. There are some students who are continuing from previous year, there are some students who are new. So the sets for question paper for both of you would be slightly different. Theme would somewhat be related, but topics would be different. Okay. Sir, Can I try one? Yes. So you were talking, मैं वो जो hello. Yes. Sir, वो China वाला point that I made. So you said that I shouldn't make such points. Can you please elaborate a little more on it? Vaibhav, can you come in front? Yeah, Vaibhav. The Vaibhav देखो. What happened during that point of time? मैंने ये नहीं कहा कि आप वो पॉइंट मत बनाओ, आप एटलीस्ट शुरू में उसको लेकर मत बनाओ. मैंने आपने 3 एग्जांपल वहां पे दिए थे, और तीनों एग्जांपल एक मैक्रो लेवल के थे, बहुत ही हाई लेवल के थे. तो अगर आपने ऐसे ही एग्जांपल ऐसे में शुरू में तीनों एग्जांपल बहुत ही हाई लेवल के लिखे होते, तो immediately you lost that opportunity to emotionally connect with the examiner. उस टॉपिक पे जहां पे आप उसको कुछ ऐसी बात बोल सकते थे जो उसके दिल को छू जाए. देखो, फिलोसफिकल ऐसे हैं जहां आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं इमोशनली. तो वैसा इमोशनली कनेक्ट होइए उससे. वो सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने के बाद आप बाद में चाइना के बारे में लिखिए, रशिया के बारे में लिखिए, इंडियन गवर्नेंस के बारे में लिखिए, सब लिखिए, नो डाउट. बल्कि वो लिखना भी चाहिए. वहां पे फिर आपकी वैरायटी दिखेगी, या फिर मैक्रो लेवल पर आएंगे. लेकिन आप शुरू में ही ऐसे बोरिंग चीजें कर रहे हैं यार. टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है,
बहुत No, बताओ no, कितना sir. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन चलो Sir, this हाँ, seems to be some confusion. हुआ क्या एक्चुअली, मेरे कुछ हाँ, पॉइंट्स ना आपसे मैच करते थे, तो मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने की कोशिश की है जो आपसे बहुत डिफरेंट है, वो मैं शुरू में नहीं ऐड कर रहा था। बस मैंने वो पॉइंट्स बताने की कोशिश की जो मुझे लगा कि वो आपसे थोड़ा डिफरेंट थे, राइट तो राइट जो थोड़ा मैच करते थे वो मैंने बताया नहीं। ये तो पॉइंट मेरा कहीं मिडल में है। देन इट इज ओके, फिर उसको रीलुक किया जा सकता है उस पॉइंट को कि वो पॉइंट कैसा है, ठीक है। आई विल अगेन हैव टू सी दैट पॉइंट कि वो पॉइंट आपने क्या बोला, और उसमें फिर मैं मना नहीं करूंगा। एज आई सेड, देन इट इज एडवाइजेबल यू राइट समथिंग फ्रॉम मैक्रो लेवल, Yes. but don't begin your essays with such boring examples. Boring in the sense that say something which Human which is related to human nature, which examiner may also have faced. अब ये वाला जो चीज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि हर इंसान जब बड़ा होता है, 1 साल बीत जाता है, या तो आप सेलिब्रेट कीजिए या फिर आप बूढ़े होने का गम मनाइए, सबको मरना है। ये क्या एग्जामिनर ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा? किसी भी एग्जामिनर ने सोचा, वो किसी भी डिसिप्लिन का, वो हिस्ट्री वाला चेक कर रहा हो, लिटरेचर वाला कर रहा हो, फिलोसफी वाला कर रहा हो। मोस्ट प्रोबेबली आपकी कॉपी से चेक करते हैं तो लिटरेचर वाले करते होंगे या फिर फिलोसफी वाले करते होंगे, आई थिंक। Right. या किसी भी डिसिप्लिन का करता हो, वो सोचेगा ना, हाँ कुछ उसे मिलेगा जो उसकी जिंदगी से रिलेटेड होगा। तो ये चीजें एक ह्यूमनाइज्ड एग्जाम्पल हमें लिखना है ये। और इसीलिए मैं आपको बहुत ही हार्डकोर फिलोसफीज नहीं सिखा रहा अभी। हार्डकोर फिलोसफी जो होती है वो फिलोसफी ऑप्शनल में ठीक रहती है। एंड अगर आपकी कॉपी चेक करने वाला फिलोसफी ऑप्शनल का पर्सन नहीं है, तो उसके लिए फिर वो ऐसे आपका वो लिखा हुआ ऐसे बोरिंग हो जाएगा, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी फिर आपसे कनेक्शन लूज कर देंगे। Got your point. सर ओके मुझे सर एक एग्जांपल याद आ रहा है सर से ह्यूमन यार ये ऐसा बता सकता हूँ। जल्दी से बताओ राज। या यस सर, जैसे सर कुछ पार्ट ऑफ अ कंट्री में सर हम मैरिज का इंस्टीट्यूशन शुरू करते हैं बाय सीइंग द ज्योतिष, बाय सीइंग द फ्यूचर। अगर वो मैच हो रहा है तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सर ये हैप्पीनेस हमें सीधा करना चाहिए रादर देन सीइंग द फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, इफ वी लाइक द पर्सन वी स्टार्ट रादर देन ज्योतिष देखेंगे और फिर वहां नहीं होगा तो कैंसिल करते हैं सब पार्ट ऑफ द। राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक दिस एग्जाम्पल वेरी मच। अब बाकी लोग सुनो, अगर इस एग्जाम्पल को अगर आप एक स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हो, इफ यू हैव दैट कैलिबर टू कन्वर्ट दैट इनटू एन एनेक्डोट, यू कैन ट्राई इट। सब कोशिश करना, अगर एनेक्डोट बना पा रहे हो तो लिखो उस एनेक्डोट को, उसके अंदर कैरेक्टर्स बना दो। देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल एंड बॉय। मैं अब मैं सोचता हूँ आजकल के नाम ना लिखा जाए, नेहा राहुल ये सब, बिकॉज शायद यूपीएससी में नाम डिस्क्लोज करना एक गलत चीज होती है, तो मे बी दे कैन टेक अकाउंट ऑफ व्यू टू दिस। Anyway, it's your choice. आप नाम लिखिए, they're two individuals, they love each other, they're happy to be with each other, they have planned to marry, but just before they were finalizing their marriage, and they have approval of their parents also, everything is falling in line, but suddenly some astronomical details come out, according to which it is said that the marriage would turn into a disaster, or maybe death of some person. Should they go forward with the marriage, or should they hold back? उसके बाद फिर टॉपिक पे आ सकते हो। अगर यहीं पर आप ये लिख देते हो कि they could not marry because of that fear of catastrophic situations taking place, तो ये भी उसके बाद ये भी किया जा सकता है। लेकिन एंडिंग देने की जगह एक क्वेश्चन छोड़ दो वहां पे कि शुड दे गो फॉरवर्ड एंड मैरी और शुड दे होल्ड बैक। अगले पॉइंट पे आ जाओ। क्वेश्चन such as these have plagued humanity since the beginning, that should we be obsessed, should we be concerned about the future or be more driven towards our present? अब आपने जब यहाँ पे आंसर नहीं दिया ना, वो एग्जामिनर ढूंढता रहेगा आंसर, उसके दिमाग में घंटी बजती रहेगी कि सच में करना क्या चाहिए था उनको यार, शादी कर लेनी चाहिए थी या फिर अलग हो जाना चाहिए था, खुद की जिंदगी में सोचने लग जाएगा। यहाँ पे आपने बहुत प्यारे तरीके से फिर आप अपने इस पॉइंट को एक एनेक्डोट में कन्वर्ट करके और आपने उस एग्जामिनर से कनेक्शन बना लिया। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? इनफैक्ट इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, जिनको याद करने का अच्छा लगता हो, ठीक है, वो याद कर सकते हैं। देयर इज एन अवार्ड विनिंग नॉवल, क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक, इट इज बीइंग
taught in all Indian universities. This novel is written by Anita Desai. थोड़ा सा यहाँ पे सुन लो, ठीक है? कहानियां सुनते हैं तो हमें philosophy ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है. Can I go ahead with this? Do I have approval of all of you? Yes. Yes, sir. There is this novel, Cry the Peacock, written by a feminist writer. I think she's Anita Desai. Most probably she's Anita Desai, whose daughter Kiran Desai won Booker Prize for Inheritance of Loss. Anyway, this is the novel in Cry the Peacock, Anita Desai. She talks about, in this novel, there are two characters, Maya and Gautam. Maya is a woman who believes in love. उसे जिंदगी में प्यार चाहिए, अपने हस्बैंड से उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए. Husband is a, I think he is an engineer or वो से या फिर he's doing some government job. Most probably I think he is a government job and he's an engineer or a civil engineer sort of thing. And he's very mechanical in life. He is very rational. ठीक है? He is driven by rationality. He is driven by objectivity. And Maya is someone who believes in love, who is passionate. उसे इमोशनल कनेक्टिविटी चाहिए. अब इन दोनों के बीच में एक मिसमैच है. अब देखो बहुत से लोग, अब इस मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूँ, आपको अब समझ में आएगा कि रैशनल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है एंड व्हाई इन लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज वी डू नॉट लव दिस वर्ड रैशनैलिटी सो मच एंड व्हाई हाउ रैशनैलिटी इज सो मच अपोजिट ऑफ पैशन. तो होता क्या है इस नॉवल में, माया जो कैरेक्टर होता है, व्हेन शी वाज यंग शी हैड, और आई थिंक अराउंड हर मैरिज शी हर्ड ए प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी. उसे एक प्रोफेसी मिलती है कि आफ्टर हर मैरिज, after 4 years of her marriage, one of the partner will die. ठीक है? अब उसको ये जो डर है कि 4 साल बाद एक पार्टनर मर जाएगा, उसको ये डर सताने लगता है और उसको ये डर लगने लगता है कि वो मर जाएगी. और इस डर की वजह से वो अपनी उस मैरिज में ठीक से इन्वॉल्व नहीं हो पाती और उसका डर जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि लास्ट में सच में ऐसा होता है कि एक मर जाता है, पागल होके मर जाता है वो. आई थिंक छत से कोई नीचे गिर जाता है. बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक वो माया नहीं होती, वो शायद गौतम होता है जो मरता है, या वो गौतम को नीचे गिरा देती है और लास्ट में पागल हो जाती है. इन दिस वे एक फियर ऑफ जो प्रोफेसीज होती हैं, हमें कई बार ना जिंदगी में प्रोफेसी हम कहीं से सुन लेते हैं कि ऐसा होने वाला है और जो प्रोफेसी से होते डरते 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 कहीं ऐसा हो ना जाए, फिर वही चीज हो जाती है. अब यहाँ पे देखो रैशनैलिटी, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रैशनैलिटी क्यों एक बुरी चीज मानी जाती है. रैशनैलिटी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ. गौतम, अब ये है कैरेक्टराइजेशन, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन. देखो राइटर का कितना अच्छा है. गौतम कौन थे? बुद्धा. गौतम बुद्ध. माया कौन है? माया का अर्थ क्या है? Maya, It's a illusion, demon. worldly pleasures. Worldly pleasure, worldly pleasure. So there, through the names itself, writer has shown a contradiction between worldly pleasure on the one side and otherworldliness or disillusionment with the worldly pleasures on the other side. ठीक है? इन दोनों के बीच में कैसे एक मिसमैच है. माया जो है वो फेमिनिन, एक ट्रेडिशनल वुमेन को डिनोट करती है. गौतम एक बिल्कुल एक टिपिकल एक ट्रेडिशनल मेल को डिनोट करता है, हु इज नॉट सो मच इनटू लव एंड इमोशंस. कहानी के शुरू में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इनके नोवेल में, एक डॉग है. मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कुत्ते का नाम क्या था लेकिन आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया जा रहा है रैशनैलिटी का. वो जो कुत्ता होता है, वो कुत्ता मर जाता है, दैट डॉग इज डेड. और उसकी, अब जिनके घरों में कुत्ता होगा उनको पता होगा कि व्हेन अ पेट डाइज योर हाउ, आपको कितना दुख होता है. तो माया उसकी डेड बॉडी के पास बैठ के सोच रही है, दुखी है, वो अंदर से रोना चाह रही है, आंसू फंसे हुए वहां पर. इतने में गौतम, उसका हस्बैंड, आता है और उसे देखता है माया को कि कुत्ते के पास ऐसे बैठी है, मरे हुए कुत्ते के पास. तो वो उसे माया बोलती है कि दैट डॉग डाइड. तो गौतम बोलता है कोई बात नहीं, वी विल बाय अनदर वन, और इसको बरी कर देते हैं और उसको सीधे उसको बरी कर देता है वहां पे. अब गौतम डज नॉट पार्टिसिपेट इन दैट प्रोसेस ऑफ ग्रीफ. माया वहां पे रोना चाहती थी, गौतम नहीं रोता उसके साथ, इन द सेंस उस मूवमेंट पे वो उससे डिटैच्ड होता है. ही इज वेरी मच ड्रिवन बाय रैशनैलिटी. रैशनैलिटी क्या कहती है कि कोई मर गया तो उसको बरी करना चाहिए. दिस इज व्हाट ए लॉजिकल वे आउट इज. व्हाट इज इमोशनल वे ऑफ दिस, इमोशनल एंड पैशनेट व्यू क्या कहेगा कि उस डेड बॉडी के पास बैठ के आप रो, दुखी हो. रैशनल वे क्या कहेगा कि अपना टाइम बचाओ, क्या जरूरत है, कुत्ता ही तो था, एक और आ जाएगा.
तो ये रीजन है कि लिटरेचर में या ह्यूमैनिटीज में जो रैशनैलिटी है इसको कोई बहुत पॉजिटिव वे में हम लोग नहीं देखते। हमें ऐसा लगता है कि जो रैशनल लोग हैं आप लोग दूर रहो, आप लोग इंसान को नहीं समझ पाते, आप लोग ह्यूमन नेचर को नहीं समझ पाते। साइंस और रैशनैलिटी है वो ह्यूमन नेचर को नहीं समझ पाती, वो हमेशा प्रॉफिट लॉस बेनिफिट इन सब चीज़ों में फंसते रह जाती है। और माया जैसे हम सब लोग अपनी जिंदगी में अधूरे रह जाते हैं। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समवन हु कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक माया है और अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल सराउंडेड बाय गौतम। या हो सकता है आप खुद गौतम बन के किसी और की जिंदगी को खराब कर रहे हो, बट ये जो नोवेल आप पढ़ेंगे तो दिस इज हाउ। इससे इस मेरा पर्पस आपको बताने का ये है कि मिलते जुलते एग्जाम्पल, इससे इंस्पायर्ड होकर अगर आपको कोई एग्जाम्पल आते हैं याद, नॉट नेसेसरली द सेम एग्जाम्पल्स, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी एक इमेजिनेशन डेवलप होगी जो आपको ऐसे में हेल्प करेगी एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी, व्हाई रैशनैलिटी इज नॉट सच ए वेरी very worthy word in literature. Why it's not a worthy trait. When someone comes and says I'm rational, it basically means he's not driven by passions, he's not driven by sensuality and things like that. Yeah, so this was in as a supplement to what Raj said. It was a very good example, Raj. Good. So we can end the class now. Sir, when will be the next class? Next class आपके next test के बाद होगी and most probably it will be next week. टेस्ट तो कल है ना? टेस्ट कल है, तो आपको टेस्ट लिखने के बाद, टेस्ट आपका कल है तो मुझे कॉपी चेक करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। जो जितनी जल्दी कॉपी सेंड कर देगा उसका आई विल टेस्ट दिस कॉपी एज अर्ली एज आई कैन, मतलब इन द सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच यू सेंड। ट्राई टू सेंड योर एसे टुमारो इटसेल्फ, डोंट डिले दैट, बिकॉज अगर कोई डिले करता है यहाँ पे तो उसका फिर पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा हमारा, जो जो भी सीक्वेंस है पूरा, वो पूरा सीक्वेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। Sir, please provide this the recorded lecture like as soon as possible so I can go through it properly and then write the essay. Which one? Today's class, sir. You want to again see the today's class? Sir, I have actually seen it, but in between I have another session also running on, so I have to manage both, sir. I need to watch it more concentrated, in a more concentrated way. Okay, sure. I will record. See, ये 2 घंटे का वीडियो से रेंडर होने में और सेव होने में टाइम लगता है, तो I will share it. Don't share it with other people outside. Okay, okay, sir. Okay. ठीक है. Okay, with this we will end our class. So the bottom point is, आपको जो आज बताया जा रहा है वो ये कि और शायद मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि there are some qualities which we must believe in. क्वालिटीज ऑफ फिलोसोफर वो हमें अपने अंदर इम्बाइब करनी चाहिए, और अपने ऐसे में चाहे वो किसी भी टॉपिक पर वो ऐसे हो, वी कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग फ्रॉम दैट। और वो चीज़ें क्या हैं? दे आर, फिर से रिवाइज किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ अथॉरिटी, क्रिटिसिज्म ऑफ कमोडिफिकेशन। अगले कुछ एसेज में इस तरह की कुछ और चीज़ें लिखी जाएंगी, कुछ और एग्जांपल्स अगले डिस्कशंस में आपको दिए जाएंगे जो आप इन अ वाइड रेंज ऑफ ऐसे यूज़ कर पाएंगे। सो विद दिस वी वुड एंड। ओके, थैंक यू। या 1 सेकेंड होल्ड ऑन, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ टेलीग्राम पर। ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन इट इमीडिएटली, राइट अवे। मैं आपको लिंक चैट बॉक्स में सेंड कर रहा हूँ, सेव दैट लिंक एंड ज्वाइन इट।
It is taking some time. I will email you the link. Okay, you can join it. अगर जिसको link नहीं मिलता है तो please message me in person. ठीक है? But do join the group. Okay. Okay, I sir. can end it now. I will end this class now. Thank you all. And do give the test tomorrow. And the next session would possibly be we will take it next week, or if possible, maybe day after tomorrow. I will communicate with you when we will be taking it. But most probably there will be some delay, or there will be some gap for a few days now. Okay.